सो बीच में भी क्या रहेगा, ये मैं एक बार आपको दिखा के फिर मैं आपको बेसिकली, मेरा थियरी का प्रेजेंटेशन बहुत कम है, प्रैक्टिकल अप्रोच में ज्यादा दिखाऊंगा। ओके और ओके। ये टू वे अप्रोच करना चाहिए। मतलब कैसा है कि इसमें आप मेरे से बाद में मत पूछना, मेरा एक स्लाइड खत्म हो जाए तो मैं वहां पे आपको प्रैक्टिकल ले जाऊंगा, उसके बाद आपको जितना सवाल पूछना है तो उसमें पूछ लेना, क्योंकि हमारे पास सर टाइम है ना हमारे पास। हाँ टाइम है, टाइम का क्योंकि इशू नहीं। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने प्रॉपरली सीख लिया, सो मैं मान के चलता हूँ कि आपको जबरदस्त इन्वेस्टिंग करने से या सेक्टर स्पॉट या स्टॉक स्पॉट करने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको इधर यूट्यूब में इन सब में मतलब होली ग्रेल पता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चार्ट्स पे ही है ना, क्योंकि हम चार्ट्स ही देखते हैं, उसके सिवा हमारे पास कुछ भी माध्यम है नहीं देखने का। और हिंदी इज गुड ना, हिंदी इंग्लिश या कैसा माध्यम रहेगा। बोथ बोथ यू I'm कैन हिंद, बोथ यू कैन स्पीक। okay. So we will have a dialogue in English. So both Hindi and English. ठीक है? So basically what we are going to do today is हम देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ मार्केट स्पेकुलेशन। सो आपको पता है जब से मार्केट आया है तो ये मार्केट स्पेकुलेशन मार्केट का ही है। ठीक है? यहाँ पे जो स्पेकुलेट करते हैं वो बड़े बड़े प्लेयर्स स्पेकुलेट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम FIIs, DIIs, प्रो क्लाइंट्स, फिर आर्डन इन्वेस्टर्स, फिर जो रिसर्च एडवाइजरी फर्म्स हैं, जो बड़े बड़े रिसर्च एडवाइजरी फर्म्स जो 3-3, 4-4 लाख क्वांटिटी लेते हैं और फिर अपने क्लाइंट्स को देते हैं। ठीक है? फिर PMSs है, फिर ऑपरेटर्स हैं, ये सारे मार्केट्स को चलाते हैं। सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि मार्केट को स्पेक्युलेट किस पॉइंट से किया जाता है और मार्केट स्पेक्युलेट कैसे होता है। सो इफ वी कैन लर्न एटलीस्ट 50% हाउ द मार्केट डायनामिक्स वर्क्स, हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छा। और डिप्स पे या फिर अच्छे स्टॉक्स, अच्छे वैल्यूएशन पे, प्राइस वैल्यूएशन पे, मैं फंडामेंटल पे नहीं जा रहा हूँ, टेक्निकल प्राइस वैल्यूएशन पे जिसको हम लोग वैल्यू जोन बोलते हैं, वहां पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। सो बेसिकली आज का पूरा टॉपिक यही रहेगा, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ मार्केट स्पेकुलेशन। सेकेंडली, अगर मैं मार्केट स्पेकुलेशन की बात करूं तो उसमें दो ही चीज या तीन ही चीज आता है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज में तो हम कुछ कमा नहीं सकते। वन इज अप ट्रेंड, द मार्केट स्टेज और द स्टॉक स्टेज अप ट्रेंड, जिसमें आप कई चीजें कर सकते हैं, जैसे स्टॉक खरीद सकते हैं, फ्यूचर खरीद सकते हैं, कॉल खरीद सकते हैं, पुट बेच सकते हैं, अगर आप बुलिश व्यू है तो आपका। सेकंड इज डाउन ट्रेंड, जहां पे आपका बेरिश व्यू है तो वहां पे आप फ्यूचर बेच सकते हैं। स्टॉक आप बेच नहीं सकते इंट्राडे में ही, अगर आपने बेचा है तो 3:10 को उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर्स कैरी कर सकते हैं शॉर्ट को, पुट खरीद सकते हैं या कॉल बेच सकते हैं। ठीक है? डाउन ट्रेंड में वो है। लेकिन जो 70% मार्केट रहता है वो रेंज बाउंड रहता है। मतलब एक रैली आने के बाद, एक डाउन रोड रैली आता है, उसके पहले एक रेंज में मार्केट रहता है। मतलब अगर रिटेल्स, आपके और मेरे जैसे रिटेल्स, ये रेंज को डिकोड करना समझ लें, डिकोडिंग द रेंज, मतलब एक रैली के बाद सडनली 90 डिग्रीज वाला स्टॉक या मार्केट साइडवेज कैसे हो जाता है, इट टिल्ट्स 45 डिग्रीज क्यों चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ एंगल। अगर हम उसको डिकोड करना सीख ले, जो कि बड़ा सिंपल है चार्ट्स पे, हम देख नहीं पा रहे हैं, हमको जो देखना है वो कुछ और देखते हैं, जो मार्केट्स दिखाना चाहता है वो हम लोग देख नहीं सकते। अगर ये रेंज डिकोड कर ले तो वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम ए सडन फॉल। ठीक है? सेव मतलब ये नहीं बोलता कि 100% होगा ही, लेकिन इसमें आप इंफॉर्म्ड फॉल के बारे में पता कर सकते हैं, यू कैन बी इन्फॉर्म्ड। लाइक बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स, फंड हाउसेस जो करते हैं, जैसे कि क्वांट, क्वांट फंड, जैसे हम लोग उनको मिलने जाते हैं रेगुलरली क्वार्टर में, HDFC फंड मैनेजर्स को मिलने जाते हैं, दे आर वेरी सॉलिड इन फंड पिकिंग, एग्जिट भी उनका सॉलिड रहता है। तो उनके पास ऐसा क्या चीज है जो हमारे पास नहीं है, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट चार्ट्स। हाँ, हो सकता है उनके पास ब्लूमबर्ग टर्मिनल है, अलग अलग पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो चीज तो रिटेल के पास फ्री में अवेलेबल है NSE के साइट्स पे। ठीक है? या मनी कंट्रोल पे, हम आगे उसमें भी देखेंगे। सो बड़ा पैसा आपको डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में तो मिलता ही है, लेकिन इन्फॉर्म्ड पैसा रेंज में मिलता है, जहां पे
इक्विटी में कुछ भी मूवमेंट नहीं होता, लेकिन एक मूवमेंट ऊपर या नीचे की तैयारी कर सकते हैं, या एग्जिट या एंट्री हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो बेसिकली मैं मान के चलता हूँ, कोई मेरे को बोलता है कि मैं इन्वेस्टिंग ही करना चाहता हूँ, ट्रेडिंग ही नहीं करना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में पैसा नहीं है। ये सब वो लोग बोलते हैं जो इसको गैम्बलिंग की तरह लेते हैं और जो क्विक मनी बनाना चाहते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग से क्विक मनी बनता है, लेकिन उसको एक हमारे जैसे फुल टाइम ट्रेडर्स बड़ा डिफिकल्ट होता है अपने दिन को मैनेज करना या मंथ को मैनेज करना जहाँ पे ट्रेंड नहीं होता। ठीक है, आप जैसे ही घुसते हैं तो आप छोटी क्वांटिटी से, जैसे 100-200 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी से नहीं हम लोग एंट्री लेते, कोई भी स्टॉक में 5,000 10,000 क्वांटिटी लेते हैं। अगर 2-5 रुपए की मूवमेंट अगर नीचे की आ गई तो हमारा 50-60 हजार रुपए का नुकसान रहता है। ठीक है, वैसे ही हमें ट्रेडिंग विद ट्रेंड, मतलब अगर ट्रेंड ही नहीं है तो मैं कभी भी स्टॉक पे ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ट्रेंड नहीं है। आप ट्रेंड ट्रेडर हो तो ये आपके लिए अभी का जो फेस चल रहा है मार्केट का, उसमें ट्रेंड नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि अच्छे स्टॉक्स आपको इन्वेस्टिंग के लिए नहीं मिलेंगे। जब भी ट्रेंड नहीं होता वहां पे ही इन्वेस्टिंग होता है। सो मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को दोनों को मिक्स करना, विच वी कॉल ट्रेड वेस्टिंग। Simple concept, trading and investing. So if you are a trader, you will pick the stocks well. If you are an investor, you will hold the stock well. ठीक है, इन बबल मार्केट आप उस स्टॉक पे अगर डिमांड जोन पे पिक किया तो आप होल्ड करोगे। क्योंकि अगर प्रदीप सर ने कोई स्टॉक, अगर मान लो कि मैंने अगर कोई स्टॉक सेलेस्टिक टाटा मोटर्स 1,050 पे उठाया, टाटा मोटर्स, और प्रदीप सर ने डिमांड जोन देख लिया, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, शम्मी ने अगर ऊपर उठाया, लेकिन ये आएगा तो सही ना, स्टॉक साइडवेज है और अभी जो चल रहा है 940 रुपीज चल रहा है। सो मेरा जो एंट्री है वो टॉप पे एंट्री है 1040, और प्रदीप सर का जो एंट्री है वो 950 पे एंट्री है। वैसे ही अगर स्टॉक वापस मेरे लेवल पे आता है तो आई विल ऑलवेज कंसिडर टू एग्जिट। मैं डरूंगा कि वापस नीचे जाए तो, लेकिन प्रदीप सर का ऐसा नहीं होगा, ही इज ऑलरेडी गेन्ड 100 पॉइंट्स। दिस इज हाउ ए रिटेल हैज बीन पुश्ड के टॉप पे खरीदो, टॉप पे खरीदो, ब्रेकआउट्स है या ऊपर ही जाने वाला है, हमें कुछ पता नहीं होता। मार्केट्स आर वेरी इंडाइसिस। अगर कोई भी बंदा ये बोलता है ना कि मुझे सब कुछ पता है, वो झूठ बोल रहा है, ताकि उसको सबको बताने की जरूरत क्या है, वो तो अपना घर बार बेच के मार्केट में पैसा लगा के दूसरे दिन करोड़पति अरबोपति बन सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ट्रेंड जो है वो एक बिहेवियरल है। सो ट्रेंड क्यों है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। It impulsive move. When the market makes an impulsive move, the retail also make their impulsive move. जहां पे जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट्स या टॉप पे आने लगता है, रिटेल वहां पे जाता है। फॉर एग्जांपल, लेट मी गेट यू टाटा मोटर्स। एक मिनट प्रोड्यूसर, ये देख लेना कि मेरा ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है क्या? नहीं, ये आपको बंद करना पड़ेगा। अच्छा, ओके ओके। या इसको मिनिमाइज कीजिए या बंद कीजिए इसको। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अगर आप मैक में है तो स्लाइड कर सकते हैं लेफ्ट राइट और सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा वो आप इसको बंद कर दो कि वो चालू करना पड़ेगा, नहीं तो आपको। हाँ, एक एक मिनट, ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। या शेयर स्क्रीन में नया शेयर करोगे तो वो भी आ जाएगा। शेयर स्क्रीन में क्लिक करके यू सेलेक्ट ए न्यू न्यू वाला, तभी आ जाएगा। एक मिनट, मेरे को ना ये नहीं दिख रहा है मेरा प्रेजेंटिंग होती है। और एक रिबन होता है जूम में, वो आपको उससे आपको दिख सकेगा कि यार शेयरिंग स्क्रीन तो नीचे है। अभी आपको क्या दिख रहा है? एक मिनट, अभी मैं न्यू प्रेजेंटेशन शेयर दिख कर रहा है, देता हूँ। अभी एक मिनट, मैं प्रेजेंटेशन दिख न्यू रहा है। शेयर। हाँ, प्रेजेंटेशन, मैं न्यू सब शेयर क्या दिख है रहा है। इस, हाँ, इसमें क्या है, थोड़ा मैं वीक हूँ तो मेरे साथ प्लीज बने रहना। बेस्ट है, इसको बंद कर दीजिए और नया चालू कर दीजिए। हाँ, ये अभी आपको दिख रहा है? नहीं, हाँ अभी दिख रहा है। दिख रहा है? ये तिजोरी वाला दिख रहा है, तिजोरी। हाँ हाँ तिजोरी वाले दिख रहा है, ये हाँ दिख रहा है हाँ आपको? हाँ, ट्रेडिंग ये दिख, हाँ दिख रहा ट्रेडिंग है, दिख रहा है, दिख रहा है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो बेसिकली मेरा जो पूरा काम रहता है, मैं एक भी स्टॉक, मेरे 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 लिस्ट में एक भी स्टॉक नहीं दिखेगा आपको।
पहले लिस्ट में, मेरे लिस्ट में आपको सब कुछ इंडाइसिस दिखेगा, क्योंकि इंडाइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेंड को डिकोड करने के लिए। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा वापस यहाँ पे तिजोरी पे लेके आता हूँ। आपको मेरा तिजोरी दिख रहा है? हाँ, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको एक सिंपल चीज बोलता हूँ, जो अपना जो इंडिया का लाइफ लाइन है विच इज निफ्टी 50, करेक्ट। सो निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे पिछले एक साल के अंदर एक्सुलबरस रिटर्न दिया है क्लोज टू 30%। ठीक है। अभी हमें किसी को पता नहीं है कि 30% में कितने लोगों ने एंट्री किया था और कितने लोगों ने एग्जिट किया है, लेकिन हमें ये जरूर मालूम है पैनिक सिचुएशन जैसे ही आ जाता है सारे अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं, क्योंकि वो न्यूज बेस्ड इवेंट न्यूज देखते हैं, ये गिर जाएगा वो गिर जाएगा। अच्छा पिल्ले जी, लेकिन लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है इंग्लिश में बोलने के लिए। अच्छा, ओके हाँ, ओके कैन यू ओके, स्पीक मोर इन इंग्लिश एंड yeah, लेस इन हिंदी? absolutely, absolutely, हाँ, प्लीज absolutely. प्लीज। So हाँ, so 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 when we are decoding the markets, the first thing that we need to decode is the index. So index for Indian index is been led by Nifty 50. Okay. So Nifty 50 last 1 year data, if we take the recent data, so it is trading at say close to 30% return in 1 year. So people like you and me are more worried about the 1 week disaster that, or 1 week correction, or 1 week mayhem that we are seeing, which is close to 2% or 2.5% drop down. But what we are not seeing is the opportunity that it possesses. In Nifty 50, अगर ये गिरता है, या if it falls down more, how much correction then it can go? That we are able to see from technical chart. So hope everyone is able to see my technical charts. Okay. So basically everyone have to download a wonderful tool which is free for use. You don't need to have any payment paid thing like this. It is the trading view. Okay. Very easy to use. I hope Pradeep sir सबको Yeah. सुनाई दे रहा है ना ठीक से? हाँ हाँ, don't worry. So basically what we are doing is when you are going to trading view, you will come to know, like when you type Nifty 50 over here, so Nifty 50 is an index, so we'll always take index. So this is a daily chart. Okay. So this represents the behavior of total number of participants in the world trading Nifty on that particular day. Okay. This is the 13th March fall which we had. So let me just mark this. Okay. So this is the fall on the 13th we had. Okay. So basically what we are seeing is only the fear and greed index in a single candlestick. So we are not really bothered about the candlestick, the up green or red, but we are really worried about how the candlestick positions are made. So institutional manipulation happens at a certain zone. It doesn't happen like this. Okay. Institution always trades at a zone. For example, the recent zone, if I extend my trend line like here, or maybe slightly here. Okay. So basically, let me again give a small understanding on a simple, quick way of identifying zones where the institutional are really having their orders. So basically, this is a level of breakout. After the consolidation, see, market made a move. This is called impulsive move till here. Okay. When the market was going, you can see one small correction, a small dip, not correction, a small dip from, say, like 90-degree. It had a slight curve. So basically what I was talking about, please be very focused on why the market is having an exhaustion, why the market is having a curve when it was going like straight rocket.
Why is the curve made? The curve is made to flush out the retails. If like this move, when the retail are here in the TV channels and all, people will say Nifty is breaking out, Nifty is breaking out, Nifty is breaking out. Many people will come and trade Nifty 50 stocks. Even they have, they will buy futures, they will buy options, they will do all sort of things. But for what? In the next 1, 2, 3, 4, 5, 6th day, every retail is wiped out. Every retail is wiped out from 21,000 in this 250 points. Every retail is wiped out, and they have made to do bearish trades, because everyone will talk that will come down. This move will be covered, come down, come. But what happened? Next day, gap up. Okay. So supposingly, as I said, a very vast subject, but it can be spotted if you watch closely. Right. This was a level. This Pillai was sir, a can level. you please make the screen full, like the other information? Yeah, chart. Yeah, like Yeah. this. Yeah. Yes, yes. So this was a level. This was a level of breakout. This was a level of where retail were told it will go down. Correct. Now just see. This is a very big long leg doji candle, or I can say indecisive candle. The sellers were not able to take the price down. Simple. Buyers and sellers. These are all buyers and sellers. But look at this. Second day, gap up. How many percent? It closed over here at the body and it opened over here. 195 points gap up in Nifty. All retailers who are sold futures, bought put, sold calls are all trapped. All trapped and now forced to exit their position in loss and buy call or go long. What happened? The operators are very smart. They are saying the shift is made. When you see an option chain, or when you see like this, a shift is made. Everyone is talking about bullish. Now, whenever you are seeing this 90-degree top, what happened? Next day again, sideways. Why is it not going like straight? Sideways. Whenever the market is sideways, be very careful. A move is about to come, and the very next day, slightly taking top, we had a major fall from 21,600 to 21,100, almost 500 points down in a single day. So all those people who are again got into call longs in futures, shorted puts, wiped off. Now, where did it take support? Now, the actual learning has come in. Where did the market took support? At the same trend line where the first sell-off was made by institution. It took the exact support, closed at the support, and it has never come back till date. It has never revisited the strongest breakout or strongest resistance, took a support, validated this. This is a validation, correct? Always see that validation. This is a validation that the major orders are here. Validation, okay? Have you seen anywhere it has been tested? No, it will never come, because the strongest orders are at 21,000. It's a round number. Always remember, it's a round number. Round numbers are very much close to the big players trading system. Okay. We are competing with HFT traders, high frequency traders. So high frequency traders manage ask and bid in the morning and the afternoon. In morning 9:15 to 9:18, HFT trading runs. Afternoon 3:10 to 3:15, 3:20, HFT trader runs. They will have to cut their position. They will have to square up their position. They will have to make new entries. So retails will be always trapped in HFTs.
Okay, this is why the sudden gap ups or sudden gap down comes in the morning itself. And after that, the market settles. Now, the validation of these zones can give us an entire new system that whenever the market goes like this, and whenever you see sideways, please be very careful. See the second thing happening: straight side, fall, fall. We should be looking. Why does the market is not falling from here? We should be asking on the chart, why is the market not falling over here? Whenever don't buy puts, don't sell your portfolios, don't sell your favorite stocks. Market is not going to go anywhere because it is sideways and it's defending this positions. It should fall like this. It should come down very quickly. But no, it is not coming. It is again behaving. If the market behaves sideways on the top, it is going to fall most of the time. If the market is behaving sides on the bottom at the demand zone, it is not going to fall. It can reverse very quick. So this is the way. This is the area where should you exit your position, or you can book your profits and later come back. Okay. Now let us take an example of the recent development. So this was a very strong base where the maximum order were. Now look at this: rejection, 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 upside. This has been retested like this. Like this, retest has been made here. Okay, whenever you make a retest, second validation is also done. It is not going to go down because this area is having the strongest orders. The operators or the big players will never let their position tested. They don't want to go bear grip. Otherwise, a seller or a buyer will be activated. Here, the seller will be activated to make the market down like this. It will never let the market down. So what we are witnessing is the strongest level possible after the fall. It has not broken this and it has made a triple bottom. Triple bottom is nothing but closer or lows at the same place. The fall day, the next day, the next day. Now we need to, on Monday, tomorrow, if we can get past this candle, the previous Thursday's high, we are again in for reversals. That reversal can be sold off over here. जैसे मैंने आपको बताया था, whenever you see a market going like this straight, why does the market is coming like this? It should go straight, na? Okay. Any queries on this? प्रदीप सर? It's okay. हाँ, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ. आप टाटा कम्युनिकेशन के बारे में अपने बीच में देखा था ना, एक ही दिन में बढ़ गया था पूरा. एक मिनट पहले लोगों को ना डिमांड जोन और सप्लाई जोन का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दीजिए बेसिक. परफेक्ट. तब लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है. ठीक है. It is basically a support and resistance. So how can you mark a support and resistance? Support and resistance can be very simply marked when you go and do monthly charts. Just when you go to the trading view in your keyboard, just have to type or to press comma. When you press comma, you will get a change interval. Now in the change interval, the default would be 1 day. You just have to type M. So this will take you to the monthly chart, where the maximum trading happens. Maximum HFT or maximum big players trade on the monthly, very high time frame. It is people like you and me, retails, we trade in 5 minutes time frame, 10 minutes time frame, 15 minutes time frame, 30 minutes time frame. But the big players are not interested in 5, 10, 15 minutes. They know retails are interested because they know retails only want quick money, 1%, 0.5%, 10 points, 5 points, scalping. Big players doesn't have to care all these things. The operator will take care of all retail like us. Operator will ensure that we give our hard-earned money to the operator.
by having impulsive moves. So whenever you're seeing in one month chart, just go and mark the highs and low. Like if you are trading in March, please don't mark March top. The previous 3 months tops you need to mark. One good hack, like previous 3 months top and previous 3 months low. मार्च में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्च को मार्क मत करना, 2 दिन भी बचाओ तो भी मार्क मत करना. सही है ना प्रदीप सर? Am I clear ना? आपको क्या करना है? Leave March, February, January, December. February, January, December, mark the highs and low of month. If you are not getting wick, please mark body, and you can fine tune also. This is the highest level of order book that one can have. You don't need to have TPO bell. 2.5 lakh rupees subscription is the TPO bell, that time price order books. We can see the order books in this simple steps. Now, once you have marked this, please go to the daily chart. You have marked the important support and resistance of entire Nifty. This can be for Nifty, this can be for NG, this can be for silver, this can be for any commodities, any stocks, any futures. Everything works best in order blocks. Take it. Now we can see, why will someone buy top? No one will buy tops. Now look at, where is the first support coming? The first support is coming near 21,800. Take any channel, any paid subscription Falcon softwares, you will be always given a strongest level of 21,800 level, correct? 21,800 will be a strongest level of support and resistance, correct? So basically you want on the monthly time frame 3 tops and 3 bottom. Absolutely. So see, of the previous 3 months. Of the previous 3 3 months. So you can draw as the red as the your support line, and the red as the resistance line, and the green as the support line. So you will be able to easily identify it. Correct. No, we can also see this. Yeah. The tops are always rejection, supply. The bottom is always demand. Okay. So basically, the strongest resistance becomes the strongest support. Let me again reiterate this phrase, a very important phrase which has not been overlooked or taken care of by many retail people like you and me. The strongest resistance will become the strongest support once it comes back. Let me again repeat. The strongest resistance, like this candle, the top candle, forget all the top candles. Just focus on this line. This line, correct? Okay, just focus on this line. This line was the strongest resistance. Came back once, came down. Came back twice, came down. Again went here from 20th December, came down, and at 12th January broke. 20th December, 12th January, strongest resistance. Came back, broke. Took support. Now mark the support. Why does the market is taking support? Why is it not going down? Mark this level. It has not yet. There is no trading over here. There is no trading over here. Are you able to see any trading over here? There is no trading. No orders. No orders. No orders. No orders. All orders. Order filling. Why does order filling works? No orders. All orders. Now, if there is no orders, if the market comes sideways, you will have all orders coming in. Got it? So right now, we don't have any orders over here. We don't have any orders over here. We had orders over here. We have orders over here. So strongest resistance, strongest resistance, strongest resistance, strongest resistance once break will become strongest support.
not tested, not tested, not tested, not tested. If the slight testing come, it will test over here 21,800, and then it has to, if the volumes are good, it will reverse back. This is how demand and supply works, and demand and supply are always taken care once you know the actual proprietary stuffs. Is it clear to everybody, or you have any doubt? You can ask the question right now from the expert. Okay. Anybody has a doubt? Ek minute, Strategist, anybody has a doubt? Yeah. All are clear? Okay, go ahead. So, okay. Let me again give you an example. एक stock का example ले लीजिए. You can take one stock एक example. टाटा केमिकल देखते हैं. Recently ये देखो 90 डिग्रीज क्यों बोलते हैं हम लोग? ये सिंगल 3-4 दिन में it rallied from 45% in just 4 days. How can we cannot capture the top, but we will know where the orders are, no? Now let me show you how price manipulation is done. Go to the daily chart. Monthly chart. Monthly. We were on the daily chart. Now go to the monthly chart and just mark the highs and low of previous 3 months. You can fine tune the same. Okay, let me see if fine tune is done. Like you can go come down. Done. Now go to the daily chart. Done. So क्यों यहाँ पे हम क्यों डर रहे थे, जबकि हम बिग प्लेयर्स ने पहले से ऑर्डर मार दिया है फरवरी पे. अब the February we have seen an order flow over here, surge order flow. Now the same level, it comes to 6th February, comes again to the same level 29th February. Retails are shorting futures, buying puts, TV channel saying it will go down, sell, and what happens? The same demand upside, demand upside, demand upside, demand upside. It has never tested. This is, those who don't know any trend line or nothing can easily work wonders by drawing the order flows. These are the strongest orders for the month. Now, big player, seller, big player. You can see candle formation by seeing the length with height of the candle. You can see volumes are there or not. You can see there is a seller. If a seller is there, it can be taken out now. If the seller is taken out, you can see the breakouts. If the seller is taken down, you can exactly where the seller base is there, you can consider a breakdown. See here, breakdown. Now look at this. If the stock moves like this, it has to go up, na? Sudden down. Now what is happening? It is not coming back because this guy is having his orders over here. There is a same order over here also. The stock will find difficulty in such a bad market to come down. Otherwise, a stock like Tata Chemical, 40-50% in 4 days, such a weak market where all the stocks are corrected 10%, 15%, 20%, Tata Chemical has not corrected. Why? Because there are lots of orders. These orders are not of retail. These are of big HNI, big players, big operators. They will never let their price come down. Period. You need to understand this. And this is why the stock has gone sideways. Now, if I remove this, you will not be able to interpret anything. You will say, wow, it is going up, going down, niche girega, upar jayega. Nahin, not niche girega. This was a strong resistance. It is taking the support at the same level. Now, once the stock trades here, it will again go back. That's the institutional level order. So basically, if you are marking this, you should mark this. For me, this is a resistance, this is a support. Resistance, continuous, tested, breakout, retest. Retest is done. Previous 4 days, retest was done. Same day closing, same trend line closing,
Same trend line closing, same trend line closing. It should be come down if it is so weak. You know the market is very weak. But this stock is not weak because this has got strong hands. Any queries in this? So just one query. I mean, you mentioned about the large body which normally consider as a large trader, right? Correct. So should we also consider the volume in this whole scenario, because sometimes large candle can get created without volume also. I mean, less volume but not large volume. So See, basically, if I tell you, Mhm. volume is manipulative. Correct, na? Yes, yes. Volume manipulation hota hai na. Basically, what is volume? Volume before such large move, volume has to be manipulated. Correct? Okay. Volumes cannot surge. For large moves, volume should be muted. Let me show you. Now, good question. Let me show you how volumes are muted. Volumes. I'm not using this. Let me take you to this. All are able to see the screen? Stockage? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So basically, February पे आ जाते हैं. This is February 5th, correct? Yes, correct. This is so this is the February. ये वाला, ठीक है? First Feb. Price is 1032. Just look how retails are manipulated. This is first Feb, correct? Now pay very close attention to the price. So the deliveries is the traded volumes, or deliveries is the trading which is done, or कुछ भी मतलब volumes दिखाता है. ठीक है? Look at, there is a strong surge. है ना? Strong surge. 6th, yes. On 6th. At what price? 991. As closing price is 991, correct? A strong surge. First strong surge. Before that, there is no surge. No one interested. No one interested. Nahi. Retails are interested. Big players are not. When the big players are interested, only price will move. Achha, one simple question. For 1 rupees movement, how much quantity do you require? How much volume do you require in a stock to move 1 rupees? That can be segregated. Large, mid cap or small cap. सबका segregate करता है. लेकिन एक normal theory कि वॉल्यूम्स कितना चाहिए होगा या क्वांटिटी कितना चाहिए होगी 1 रुपए हिलाने के लिए 1 rupees movement. अभी ये Any सोचा नहीं है guesses? लैंड. No. Let me tell you, you need 5 lakhs quantity. अच्छा. है ना? For moving 1 rupees. So मेरे और आपके औकात से बाहर है. To be honest, है ना? It is out of our league to buy Tata Chemical 5 lakh quantity. Correct? But big players, big operators are those who are having ask bid softwares, spider softwares. They can create an imbalance of ask bid. They can even create volumes. So that is why volumes muted. Price hovering at the same level, 997, 979, 991, 987, 971, 957, 946, 958, 966, 955, 972 again, 977 again, 983 again, 977 again. Why does the price not coming down? Please ask. If you are tracking Tata Chemical, you should ask yourself, why is the price not going down? Why is the price? What is happening with the? Why is the price defending at 970 levels? Please understand, why is the price from October, October to December, retail frustrated.
Those taken good quantities in futures, no movement. Options premium decay. Put premium decay. Na put भाग रहा है, ना call भाग रहा है, कुछ भाग नहीं रहा है. Then they frustrated होके अगर वो निकलते हैं, what happened? Moved up. Sudden movement. Caught by surprise. What happened? People came breakout पे लो. Take Tata Chemicals on breakout. The very next day of this surge, after 3 days, people are caught at top. Still, Tata Chemical, people have bought at 1140, trapped. Money lost, capital gone, or frustrated. They are trapped from 1140. Price moves how much points? Price move from here to 20%. Now what happened? People saw an opportunity that if the price comes over here, let us short. It will come down. What happened? Showed some sign of coming down, again showed some sign coming down. People were so confident, they took puts, they shorted calls, they shorted futures, everything they did, but they didn't understand this guy is having a massive position on 6th of Feb. How can this guy let his position go in penny? ये 300 crore, 400 crore रुपए he has put in for his position at an order block, and we retail think that by buying some 500 quantities or 1000 quantities we can defeat him. No, that's the difference between order blocks. See, 6th of Feb. Why this big 6th of Feb? Why do we see this? That's order, no? After that, you are not seeing any orders. After that, you are only seeing orders over here. This is the first line of defense. You should be notified at 1000 quantities, 1000 rupees if you are tracking Tata Chemicals. On 4th of Feb, it gave the first sign that some volumes muted. Volumes are muted, as I said. Volumes muted, sudden volume pickup is coming. Why? Why is the price moving in tandem? 944, 939, 968, 973. Price is moving up and down. That is creating imbalance. On 4th of March, please check 4th of March. 2nd, 3rd, this is 4th. Exactly at this point, the order has been again fired. Exactly, see, exactly the price broke, took support, second day confirmed done, retest is confirmed at the same level where the trend line is, and after that you are not able to see the level coming till date. Okay, till date 985 is not coming. So someone who knows this is the strongest resistance, if he takes at 1130 also, he gets 200 to 250 points. Someone who is afraid, like I am afraid, I will not, let this break, but let this break with volume. I will be always be trading breakouts if I take a investment as a call. If I shorted put over here, if I long the future over here, I will not be in loss. I will be informed trader or investor. So as I say, that orders are very important, and orders can be seen freely available in Stockage. You don't have to pay for such softwares. You know, when there is a volume contraction, there will be surge. Look at this. Do you think who was retail like you and me have made this volume? No. Total traded volume plays a very important role in the market. It is the only thing which has been taken care of big players. Retails will mark ascending triangle, descending triangle, this triangle doing trend line, Twitter trend lines. Either say mark kiya, break hoga. If I mark this trend line, if I am so confident by marking trend line, will the market go like this? No, there should be orders. मेरे ट्रेंड लाइन मार्क करने से कुछ नहीं होता. There should be orders. You should always know who is got the control. Here the buyer has got control, correct? The buyer has got control. Here the seller has got control. Big volumes, big volume seller. If the seller base is broken, like defended, broke. At the same level now there is a buyer coming. Please note this.
same level. Now it has to be different. It has to be broken with volume. See, single day, this seller, both the seller have been taken out. Single day. This is the price manipulation. Single day. See, this is the 1 and 2 big seller, because by seeing the naked chart only you can see there is no volume in the selling. You can always come and see there's a big volume in the selling easily. You have naked eyes, say you can see there is no volume. Only volume this guy is making, correct? Only volume. After that you cannot see any volumes making, but you can easily see this guy making a great volume. Okay, bilkul buyer. This is not retail, correct? Now just see, he stopped. Now just see his bottom. What do you see? See, it came down, tried to move up, tried to move up, tried to move up, not able to move down. Now what happened? At the same level, the volume is created. This level only the volumes are created. Now this is very easy, but very easy to say because I'm doing this from last many years. But the concept is you cannot see this in any YouTube. You will not be able to see this in any Telegram channel or people paying so much high price. They also don't know price manipulative, because this comes from an experience and this comes from a group. You need to be in that elite group and see what they are doing, okay, and what we are doing. Sir, the current situation that currently we are seeing in the chart. So how do you read this chart from the future perspective? So can we say that comfortably that they are trying to push down to the supply zone, and now it should bounce back from here onward? So it has given a sign of bounce back. So basically, this has to be closed above this. The seller has to this level has to be taken out. The previous strong resistance has to be taken. So once the stock will trade above this here and start consolidation at this zone or some slight manipulative zone to flush retails, you can see the same level coming in Tata Chemical. This level. Perfect. Yeah. So. Yeah. So basically, you need to track this. This is a 17% move that we are going to get. And mark my words, please do write in your diary or handbooks that we discuss this. And the zone is 10802 1348. The moment this zone get defended, you can see the price going the same order tool here. Okay. Now let me take any other stock you want me to check, because it is universe only. Tata Motors. Small. Tata Motors. Okay. I was going to check small and mid cap. That would be very interesting. Let me take Tata Motors. Okay. So what I do is I always mark my levels. So let me delete all my slightly levels. different question. The stocks which are going for the ban very frequently, whether they will also follow this pattern? Frequent ban यानी कि JNFC or the India Bull Housing or JIL, which go very frequently in the ban, or Balrampur Sugar, they will also follow this type of pattern? Absolutely, sir. They will also follow this type of pattern only. But majority of these stocks are controlled by the operator. Sir, what happens is this Balram Chini and all, they from the last many months, it's been going in the range only. Okay. So someone who is buying a future will not be benefited due to MWPL, market-wide limit position. Taken. So basically, you can even see the MWPL coming in NSE, that 80%, 40%, 50%, 60%, 80% mark. Right. So please avoid anything that is hitting 80%. That will not have any movement. Okay. Secondly, sir, to again support this, whenever the stocks come out of the ban, you can see huge short covering, huge, because you can only square off your position in ban. You cannot make any new positions in futures, in options. Okay. So those who are trapped will have to book their positions. Correct ना sir? एक simple चीज. ठीक है. अगर कोई स्टॉक बैन में चला गया, उसके बाद अगर ये मान लो कि दिस इज Tata Chemical, these were in aggressive longs. March 4th, aggressive. These were in, see,
March 1st, price short covering, aggressive new long. Sirf 30 points mein these guys have made the stock aggressive new long. After that, 60 point move. After that, 100 points move. After that, 200 points move. These aggressive new longs are those where the people were forced to cover. People who? People like you and me, people like big players who were trapped on the call side, they will all have to cover their position because they were sellers. Now to cover their contract, they need to be buyer. Correct ना sir, Pradeep sir? Right. आप शॉर्ट किया था ना, आपने कॉल शॉर्ट किया था ना, आपने रेजिस्टेंस बनाया था, ठीक है. अब आपके ऊपर प्राइस चला गया, रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया, यू नीड टू कवर योर शॉर्ट ना, अदरवाइज कितना अनलिमिटेड लॉस है ना, ठीक है. when you have unlimited loss in option selling, you need to cover your position. So these guys who were sellers now becomes buyer. The moment they become buyer, a 300 crores contract or a 500 crore contract will cover into huge buying, huge spot. This is what you see over here in Tata Chemicals, huge spot, because these guys controlled Tata Chemical and now they are fully trapped. Now when they exit, you will find huge surge. Obviously, short covering moves are like this, huge surge. So you need to understand the market dynamics, and it is easily available. Sensible में ये सब चीज free है, ठीक है. Sensible में all these things are free. सर प्रदीप सर, टाइम है ना अपने पास? हाँ, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से. अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा और दिखा सकता हूँ इसलिए. तो बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एनालाइज. Now, when you come to sensible, there's something. So basically कहा ना आपको, जैसे आप इधर आते हैं, so आप इसको क्लिक करोगे. So basically you need to, ये आपका चार्ट बनेगा. So इसमें क्या होगा, ये आपको क्लिक कर देना OI प्रोफाइल. This is a new thing and absolutely mind-boggling thing. जो चीज 25-30 हजार रुपए का पेड चीज है, इन लोगों ने फ्री में डाला, OI प्रोफाइल. This will take care of all your positions that you need to say where the big players are writing the contracts. Now where they are building. Now you can simply see by clicking the OI profile here at 1300 strike. The call OI is solid, 9.8 lakhs contract standing at 1300 levels. Now, someone who is not exiting this level whenever the price is moving is the powerhouse. He has got the muscle power. You know, one contract to write, you need 1,35,000 to 1,50,000. सही है ना प्रदीप सर? ठीक है. Imagine 9,80,000 contract, a 9,80,000 contract into 1.5 lakhs. He's not a fool. सही है ना प्रदीप सर? वो he is not a fool to put his hundreds of crores on the line for retails like you and me to make money easy. He will take the entire money from retail and he will adjust it. So yes, he has done it. He has written a contract. Maybe at that time the call level was 200 rupees. Now look at the call level. It has come down very soon. Now see, now look at this, 1300 call, Tata Chemical. 1300 call, Tata Chemical. 3 rupees. 3 rupees only. Okay. Darling of some time, 85 rupees he wrote. 85 to 3 rupees. My God. Okay. 85 rupees on 7th of March. 3 rupees. This is the power of writing. If you are not studying how the big players are manipulating price used at a certain level, at an order blocks, at an important zone, we are just trading like this only. ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. Ask the science now. Why does the price will move up? Why the price will not go down? Or the price will not move up? These guys are terrific. You should only focus on these guys
because these guys have 15,000, 20,000 crores of capital. Now I'm having they have got say, lakhs of lots. I'm having just 500 quantities. So am I going to defeat all these big players with my 500 quantities or 1,000 quantities? No, I will be a fool only. So let me trade with them now. I don't have the capacity to compete with these guys, but I have the capacity to trade with them. Now, at least whatever capacity which I am. So now they have made the entire money from 86 rupees to 3 rupees. This can be always seen from a chart. Now, someone was asking me, Tata Motors, है ना? ठीक है. Now look at this Tata Motors. कहाँ है resistance? Look at just call oil. सिर्फ आप देखो call oil. 1.04 crore. So he's not a fool to have this much on the line. 1.04 crore contract into 1.35 lakhs. He is not a fool. He is informed. He builds trades. He builds positions, and we play on his positions. Our entry, breakout, and his exit. This is what I was talking about. Retail are so much happy, confident on breakouts. ये और 2000 जाएगा. What happened? 60 रुपए नीचे चला गया. Someone who's having a future is down with 60-70,000 loss. Someone who's having position in equity, say like 100 quantities also, he is also down 5,000, 6,000. लेकिन अभी जो recent trend आ रहा है ना, हाँ, अभी आप न्यूज़पेपर में मैंने 2-4 जगह पढ़ा कि now the retail is entering in the shorting also. मतलब they are not long. They are not long always. They are short also. So if we say that Tata Motor 1.04 crore, I believe of the 1.04 crore, there will be at least 20-30% retailers also who have shorted the call. Is it correct or not? Absolutely. हो सकता है सर 2, 4, 5 लॉट 10 लॉट. करेक्ट. हाँ, वो तो है ही है. 2, 4, 5 लॉट 5, 10. लेकिन पब्लिक तो इतनी है. हाँ, क्या बोलिए 1.04? सर ये 1.04 करोड़ ये इंस्टेंस में बनाया पोजीशन होगा या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनाया हुआ पोजीशन होगा सर? ये इंस्टेंस में नहीं, ये ओवर द पीरियड बनता है और एडिशन होता है. इसको लाइव मार्केट में ट्रैक कैसे करना है वो आप बताएंगे क्या बॉस? ये मैं वही बता रहा हूँ. वो सेंसिबल में चले जाइए और आप ऑप्शन चेन में जाकर टाइप करिए टाटा मोटर्स. आपको देखो ये वन मोर थिंग सर. एक मिनट को इनको बता दीजिए, पूरा बता दीजिए यहाँ पे. सेंसिबल में गए और आपको जाना है यहाँ पे एनालाइज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिखेगा. हमारे लिए ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द बेस्ट स्क्रीन दैट वन रिटेलर लाइक यू एंड मी हैव. ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट मल्टी स्ट्राइक हुआ है, FIDI डाटा, लाइव ऑप्शन चार्ट्स, stock data, screener, technical and market analysis. Now, what is to be used? First, let us come and check option chain. Option chain are only for sellers. This has nothing to do with any buyers. So someone who can decode seller can be a buyer, solid buyer. उनके साथ मिलके buy कर सकते हैं. ठीक है. Now Tata Motors, you can simply see Tata Motors having strong. सिर्फ एक ये बार चार्ट को देखना है, लाइन. what is the highest level that you are seeing is this 1000 strike price, and you can have this is the highest level writing नजदीक में. After that 1050. The last writing that they are having is at 1100. Look at the OI, 162.5 lakhs. Correct. Now 162 कहाँ है ये फिगर? 162 ये रहा सर, ये वाला ये OI lakhs है ना, OI lakhs. हाँ, अच्छा 162 करेक्ट 162. तो नेक्स्ट सवाल आएगा, ये 1 रुपया 30 पैसे में क्या करेंगे OI बना के? सो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई ये 1 रुपया 30 पैसा नहीं था पहले, ये 15 रुपए था, 30 रुपए था, 40 रुपए था. ठीक है, करेक्ट. वो 40 रुपए का अगर मान लो किसी ने 50 लाख, someone who's wrote 50 lakhs contract, 60 lakhs contract, they put unlimited money to earn limited. Correct. This is option writing. है ना? Option writers put unlimited money to gain limited money. And option buyer like you and me put limited money to get unlimited money.
ठीक है, who will lose? Option buyer only, because he's coming with a fixed mindset, छोटा लगाऊंगा बड़ा कमाऊंगा, करेक्ट? वो इजी नहीं होता मार्केट में, है ना? लेकिन ऑप्शन राइटर, he has the muscle power, he can roll down his strikes, correct? He has got 500 crores, 300 crores, 100 crores, 50 crores. Anyone who has got 100 crores can make an OI. He can rule the market by writing, correct? Anyone, suppose anyone who has got 500 crores, 600 crores, they can build a direction in the market. So for me, this is a one single screen which I see the resistance, resistance, resistance. Now look at this market. Is the gray area which you are seeing is the ATM gray. You can see the gray, na? छोटा सा gray. सर ट्रेंड वाइज इसमें सर क्या हुआ होगा कि जैसे प्राइस स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, दे आर राइटिंग मोर एंड मोर ऑप्शंस, वेटेड एवरेज, इफ वी कंसीडर वेटेड एवरेज। नहीं, वो आप VWAP के लिए बोल रहे हो. VWAP is used only for intraday. No, sir, this particular position 1.04 crores. So if we see the timeline, so as the price moves upward, they started making additional position every move up, sir. नहीं, इसके लिए आप ऑर्डर फ्लो ऐसा इजी नहीं है इसको. वही सर, एक्चुअली ऐसा इजी नहीं. देखो, मेरे को क्या कराना है, मेरे को आपको ये सिखाना है कि कैसे होता है. मतलब किसी के पास कोई 50,000 60,000 रुपए का सॉफ्टवेयर या 1 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर नहीं लगा सकता, ठीक है? किसके लिए? पार्ट टाइम ट्रेडर्स ये सब नहीं कर सकते. पार्ट टाइम ट्रेडर्स को क्या चाहिए? पार्ट टाइम ट्रेडर्स वांट टू हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड व्हिच दे कैन ट्रैक, correct? Part-time traders cannot come and trade sectors. Part-time traders cannot come and check absolute OIs or build up, ठीक है? Part-time traders can. देखिए, ये मैं आपको सिंपल चीज बोलता हूँ. ट्रू बिल्डअप ये OI है, ठीक है? What do you see? This is long unwinding, short covering, long unwinding, short covering. Now this is a cycle you need to understand. First will be long, then will be long unwinding, third it will be coming short, then short covering. This is a cycle. It cannot go like, it can go repeat also. Short covering short नहीं हो सकता. short फिर short covering होगा. long unwinding long कम होगा, लेकिन long unwinding होगा. Look at this, green और ये green, see, long unwinding, ये short, long unwinding, short covering, again long unwinding, short. Now, are you seeing any short covering move coming in? This color? No. Nothing. No. See look at the OI. Look at the OI. Unwinding. Long has been unwinded on 5th March only. 5th March को price कितना था? 1026. 7th March को price, 6th March को price कितना था? They have made so much manipulative. 1023 पे 3 रुपया Tata Motors with having lot size, ठीक है? 3 रुपया ही. Second day 1040. See what happened? Long unwinding. All people were short. What happened? Covered. Retail gone. After that, retail again came back. After that, मौका ही नहीं मिला. 1021 was the level of longs. See. Are you seeing any 1021 over here? ये देखना. Just look at the last column. Are you seeing any in the entire February, 19th February? Are you seeing any 1020? Only March it has 1020. Let me show you in a very simple way, rather than getting on this highly paid softwares and all. Tata Motors. Simple. What you need to do is just go to monthly chart. Okay. Bar this month. ये महीने को छोड़ दो आप. Don't look at this month. This month. Now see.
this is an accumulation zone, correct? We will be always worried. But look at the trend. Here, we should have bought strongest resistance becomes strongest support. It has not visited. Now what happened? Shifted. Strongest resistance broke, took support, never visited. Now what happened? Strongest resistance broke with volume, but still the wicks are there only. Suddenly you are seeing what? You are seeing one small. मैं लंच लूंगा हाँ बिल्कुल लेंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बायर है ही ना, एक बायर खड़ा ही है देखो यहाँ पे. ఎక్కడ కావాలండి చెప్పండి. ये खड़ा है. So अगर ये यहाँ आता है, let me check for couple of days. If the price moves like sideways, definitely you should take longs. If you want to earn around 10-15%, be an informed trade investor, ना. हेलो सर. 30%. हाँ बोले ना, बोलिए. सर नीचे भी बायर्स है ना उसके नीचे? बिल्कुल है. पूरा जोन ही बायर का है, ये पूरा जोन ही बायर का है. सो आप क्या करो, 30% 20% बाई करो ना यहाँ पे, स्टैगर्ड वे में बाई करो ना. कौन बोलता है? अगर और डिप में आए तो और बाई करना है, ऐसा ना? एब्सोल्युटली बाई करना है, एब्सोल्युटली बाई करना है. देखो वॉल्यूम कहाँ बना है देख लो, है ना. वॉल्यूम कहाँ बना है देख लो. हाँ, और उसके नीचे भी बनाना सर. वो एब्सोल्युटली देखो. हाँ, प्रीवियस डे का रेसिस्टेंस है ना, वो रेसिस्टेंस पे रीटेस्ट लिया ना. हाँ अभी आप समझ गए, एक सिंपल स्टेप में आप समझ गए. देखो ये बायर का जोन है. हाँ वही सर, वो टोटल बायर्स का. हाँ वही बायर. एक ही सेलर है इधर. हाँ वो एक ही है. एक ही है. इसका सेलर टॉप निकल जाएगा तो खत्म. हाँ will move like this. It has always moved like this. हाँ सर. ये टोटल बायर जोन से कुछ कहाँ भी रीटेस्ट ले गए है. करेक्ट. नाउ केम बैक. सर इसके लिए हम ये यूज करना फिबोनाची? नहीं, फिबोनाची कुछ यूज करने का जरूरत नहीं है. हाँ ओके. प्राइस फिबोनाची हाँ. will never predict price. Price is ultimate leading indicator ना. और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. प्रदीप सर क्लियर हो ना मैं इसमें? या तो ये इधर सब मिल जाएगा. देखो टाटा मोटर्स कहाँ है आपको, ये ग्रीन बार इज योर सपोर्ट. पुट राइटर्स है ना. लुक एट द पुट राइटर्स. Put writers 39.69 lakhs put writers over here. Call writers 28. You can just check put writers are strong over here, na. 39 lakhs 39.69 lakhs put writers over here at 950. Just check, go and check na option chain. Open interest आओ देखो इधर जरा Tata Motors. It will take around 10 minutes to be an informed trader or investor. After we get trapped na, we do all research. इधर चेक किया, वो चार्ट चेक किया, 10 लोगों को पूछा. Before only 5 minutes if you can spend and check, do it yourself. Look at the open interest. So March and April expiry. So let us have so look at this. 950 has got the highest recent high open interest put writers. The next put writer is at 900. Okay. So let me delete everything and show you the power of writers. So let us first go and check 950. 950 resistance broke, retest side, validated. Okay, this is 950. 950 wala recent 950. Now let me take care of 900 also. Go and check, double click the trend line, come to coordinates 900. Click enter. Resistance, breakout, support, upside. 900. Okay. Now let us come back to this resistance also, no? 1000. Double click 1000. Resistance broke,
उधर ही आया पूरा वॉल्यूम के साथ, इधर वॉल्यूम नहीं था, इधर पूरा वॉल्यूम के साथ नीचे आया, ठीक है। सेकंड 1050 13.21 lakhs, sorry 1.04 crores. Double click 1050. Wick rejection came down. This is the power of open interest. ठीक है, this is the power of order blocks. आप combine करो स्ट्रक्चर के साथ, you are seeing an uptrend. You can see an uptrend ना, इसको थोड़ा सा, हाँ इसका you are seeing an uptrend. कहाँ से uptrend हुआ था? इन द कैरेक्टर ही ऐसा हुआ था, देखो entire move in a single channel. Now the currently, if you see, this is the top, bottom, top, now the bottom, top, bottom broken. Suddenly shifting has been done over here. New shift. Shift number 1, shift number 2. Now it has to go like this, na? Up, 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 and go. So it will take couple of time to check कैसा होता है, but you can always check it moves in a wave, corrective waves. किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिए। बहुत बढ़िया आपने, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया है लोगों। जी 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 जी, थैंक यू सर। Sir, this price and volume both can be manipulated at the same time by No, you cannot. प्राइस एंड वॉल्यूम मैनिपुलेट नहीं होता है। इसका अब एक मिनट मुझे दीजिएगा, आपके ये सवाल अच्छा सवाल है, मैं आपको बताता हूँ प्राइस और मैनिपुलेशन क्यों नहीं हो सकता। फॉर दैट आई नीड टू टेक यू टू दिस, डोंट नीड टू बाय ऑल दिस पेड सॉफ्टवेयर, मैं उसको ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्राइस और वॉल्यूम बिल्कुल अलग रहता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सेम चीज बहुत एक्सपेंसिव नहीं सर, लेना ही नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ वॉल्यूम बिन्स दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए सर, इधर ये प्राइस वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। जो वॉल्यूम्स में ये जो बिन्स होता है ना, वॉल्यूम बिन्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम बिन्स मतलब वो चीज जो आप सेंसिबल में फ्री देख सकते हो, इसको आपको 60,000 रुपए देना पड़ता है। और कुछ मेरे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 7-7 लाख रुपए के, जो आपको यही डिकोड करके देंगे, इसके लिए पर, ठीक है। ये सब फ्रीली अवेलेबल है, ओके। नाउ लुक एट दिस 950, ये पहला, ये 950 से लेकर 900 जोन पे सपोर्ट लिया है, करेक्ट। प्राइस वाज 909 ऑन 13 फरवरी, करेक्ट। यू कैन सी ये स्मॉल थिंग हो रही है ना, दिख रहा है ना प्रदीप सर। ये एक छोटे से बिन पे रखता हूं, तो ये जो बिन्स मतलब क्या है, ये जो डॉट है ना, डॉट, दैट देयर इज ऑर्डर, मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम ऑर्डर्स। 950 has got the maximum orders. अगर ये ऑर्डर सेकंड वाला ये है 816 लेवल, this, so high chance that the price broke, price will come down to take a, you mean to say 816 पे the so many orders are there. What is the meaning of this? हाँ बिल्कुल। So please do come down to chart and check 820 or 815 राउंड नंबर है ना, आप एक बार चेक करो। So 800, let's take 816. Why? Let's take 816. Oh yes, clearly supply zone है। हाँ सप्लाई नहीं सर, नहीं, डिमांड जोन। हाँ रेजिस्टेंस शिफ्टेड, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, अभी तक वो रिटेस्ट नहीं मारा है ये लेवल, समझ रहे हैं ना। देखो ये गेम इज वेरी सॉलिड इफ यू अंडरस्टैंड प्राइस डायनामिक्स। सो दिस वाज अ लेवल ऑफ 29%। सो पिल्लई सर, हाँ पिल्लई सर, जितना मैं समझा कि अभी जैसे 822 पे आपने ये नंबर सॉरी लाइन मार्क की, तो यहाँ पे जब भी प्राइस आएगी और एक सॉलिड कैंडल बनाएगी, फिर हम वो कैंडल ब्रेक पर हम ले सकते हैं और उसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि मे भी अगर हम कभी गलत होते हैं तो एक एरिया होना चाहिए निकलने के लिए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मेरा एक सिंपल, आप अभी सिर्फ अभी देखो, आप ये प्राइस तो अभी दूर है, यस सर, सही है ना, ये प्राइस तो अभी दूर है, ये बिल्कुल प्राइस सर, ऑलमोस्ट आप 14% दूर पड़ रहा है ना ये प्राइस, राइट राइट ठीक है। तो राइट, किसी को मान लो अभी ट्रेड लेना है, मेरे को हाँ आगे का मालूम नहीं है, कल क्या होने वाला है या 10 मिनट में क्या होने वाला है, ये सब मेरे को पता नहीं चलेगा। कोई भी बंदा अगर आपको बोलता है कि मेरे को पता है अगला क्या होने वाला, झूठ बोलता है, ये तो ट्रेड ही नहीं करता, ठीक है, वो झूठ बोलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसके पास कंट्रोल है? कंट्रोल अभी सेलर के पास है। राइट, आप अभी कंट्रोल, अभी रिसेंट कंट्रोल किसके पास है वो मार्क करो ना सर। हाँ सेलर के कोई पास दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा कोई बायर दिख रहा है? इधर एक बड़ा बायर है सिर्फ, सही है कि नहीं? है, राइट, है ना, देखो कंट्रोल बायर के पास आ रहा है, ये बायर का डिमांड जोन है ना, बायर डिमांड जोन। प्लीज प्लीज डू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल, एक किसके डिमांड जोन पे है? दिस इज बायर डिमांड जोन, ओके, ठीक है। बायर का डिमांड जोन है ना, व्हाट लेवल? या राइट, 835। Now look at this. 835, 935, हाँ 935, look at this, Yeah. ये 950 वाला है ना, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला जो है ना, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये वाला, हाँ 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 हाँ, this one okay. 909 940, see this is the top, Okay, correct? Now you can see over here also, see 940 yes, है ना, उसके बाद क्या है, डायरेक्ट 900 है। हेलो, ओके, तो एक बार बायर यहाँ पे कंट्रोल ले लेगा, देन वी कैन एंटर हियर विद द Absolutely सेम we can स्टॉप enter लॉस। here, please mark your ओके stops, ओके ओके, please। सर जस्ट आप अपना एक जस्ट कंफ्यूजन ये भी है, लेट्स अज्यूम हाँ करता हूँ कि 935 के एरिया पे जहाँ पे आपने मार्क किया है, वहां पर हाँ, अगर ये 4 5 6 7 दिन अगर वो कैंडल रुक जाती, तो इट डजंट मीन दैट कि सर वहां पर जो बायर थे, जो बायर की इंटेंसिटी थी, जो ऑर्डर थे, वो पूरे कंज्यूम्ड हो गए, और अब अगर मतलब फास्ट रिएक्ट नहीं हुआ तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो टेकन आउट हो जाएगा। नहीं ये इसको, नहीं ऐसा नहीं है, आपको एक और चीज अच्छा, देखना है, ये डिमांड जोन पे आ रहा है और इधर ही पिवोट का लेवल है। अच्छा सर अच्छा इसमें चलो पहले ये मैं इसी से समझा देता हूँ कनेक्टेड, आपको, इसमें कनेक्शन आप मैं डालता हूँ इसमें, और सर 2-3 चीजें कर सकते हैं इसके अंदर, मैं सर आपको इसी में बताता हूँ। कनेक्टेड क्वेश्चन ये भी है सर, कि व्हाट वी आर सीइंग हियर इन दिस चार्ट ना सर, कि एक दिन डिमांड आया है, एक ही दिन सेल है, वो सप्लाई आया है। इट मे बी पॉसिबल जो इंस्टीट्यूशनल है या जो भी HN1 प्लेयर है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2-3 दिन उसको बाई करे या सेल करे, दैट इज क्वाइट पॉसिबल ना सर। पर या लेकिन इस, पर सर एक मैं आपको चीज बोलता हूँ, बड़े प्लेयर क्या 1-2 रुपए के लिए एंट्री लेंगे? आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं 1 रुपया 2 रुपया नहीं, 5 रुपए के लिए एंट्री लेते होंगे? I agree sir, but in this particular chart what is it is appearing like एक particular day पे buying हुआ है, एक particular day पर ही selling हुआ है। नहीं वो पर्टिकुलर नहीं, वो जोन देखो आप, ये मत देखो, वो जोन देखो, शिफ्टिंग देखो जोन पे, ठीक वो ऐसा मत देखो बायर और सेलर हुआ है, आप सिर्फ ये शिफ्टिंग देखो। देखो इसमें बहुत सारा चीज है, ये कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का क्रक्स बता देता हूँ। ये बड़े प्लेयर जो होता है ना, वो जो फ्यूचर्स में, अगर कोई स्टॉक फ्यूचर में है तो फ्यूचर में स्टॉक्स को मैनिपुलेशन इजीली किया जा सकता है ओआई से, ओपन इंटरेस्ट से, ठीक है ना, है ना, ओआई से कर सकते हैं। तो इतना इजी नहीं है, आप इसको चार्ट्स पे ही पकड़ो, है ना, चार्ट्स पे देखो कि किसके पास कंट्रोल है। कंट्रोल अगर आप बायर जोन में आया है तो इस पर देखो ना, आप इधर कॉन्फिडेंट थे लेने के लिए, तो इधर क्यों कॉन्फिडेंट नहीं हो? हाँ राइट राइट When you are confident over here, Tata Motors is having an EV play, Tata Motors is going to expand, Tata Motors this, Tata Motors that, you are trapped over here. Now if you are getting an opportunity to enter with limited quantities, like position sizing of 30%, 20%, whatever का जैसा पैसा है, ठीक है, पोजीशन साइजिंग से करते हो, so why not here, why not here, ठीक है, why not here? Okay, so these are the most favorable area instead of buying at the higher level. Absolutely, most favorable area, yes. हेलो, am I हाँ, audible? tell me. टेकिंग एरिया है ये। हाँ बिल्कुल, रिस्क तो सर किसमें नहीं है बताइए आप, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई है डू, ना, थैंक यू है ना। Hello, am I audible? Yeah, tell me.
हाँ सर, जैसे अभी ये 950 का सपोर्ट लेवल है, अपने ऑर्डर बुक से, अपने ऑर्डर ब्लॉक से अपने ने फाइंड किया, और आपने हाँ जैसे ओआई प्रोफाइल में वो बताया ना कि इधर ऑप्शन चेन में करेक्ट पुट करेक्ट राइटिंग करेक्ट जाता है, करेक्ट 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 तो ये जैसे डायनेमिक नहीं है, मतलब जैसे 950 के नीचे लेवल के नीचे समझो सस्टेन करा और पुट राइटिंग कम हो गई, तो फिर अपने को किस तरीके से इंटरप्रेट करने का वो चीज? देखो अभी तो आपको क्या दिख रहा है, सब हाँ अभी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट किधर है, इसके पास है ना, ये पुट राइट हाँ हाँ 890 900 का है ना। हाँ हाँ। आने क्या ये आपको फेवरेबल एरिया नहीं दिख रहा है क्या, इधर मैं एंट्री करूंगा बेस्ट हो जाएगा? हाँ 820 फेवरेबल एरिया है। 800 900 फेवरेबल एरिया है ना। हाँ हाँ हाँ। तो अगर मैं आप हूं, मेरे पास खाली 1.5-2 लाख रुपए पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, 900 का पुट बेचूंगा ना, हम्म है ना। हम्म। मैं क्या करूंगा, 900 का पुट बेच दूंगा ना। आई एम बुलिश ओनली, बट आई वांट टू हैव एंट्री एट 900 रुपीज ओनली। सपोजिंगली ये आ गया नीचे एंड मेरा पुट आईटीएम हो गया, है ना, इन द मनी, हाँ तो मेरे पास क्या रहेगा, डिलीवरी। करेक्ट। करेक्ट। मैं 40 रुपीज नीचे की डिलीवरी अभी से फिक्स कर दूंगा, सही है। आए ना आए। देयर आर सो मेनी टेक्निक, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कंट्रोल इसके पास पड़ा है। अब खाली यू नीड टू गो एंड वॉच टुमारो। कल आप देखो, 2 दिन देखो इसको, ये आज आया है ना, सेकंड दिन ये यहाँ रहेगा, थर्ड दिन यहाँ रहेगा, उसके बाद ये देखो ऊपर जाते हुए, ठीक है। आप इन दोनों लेवल को वॉच करो, देन ओनली आप सीख पाओगे, उसके बगैर नहीं सीख पाओगे। यस सर यस। इंट्राडे इंट्राडे के लिए बताइए सर। इंट्राडे में बिल्कुल मत करो कुछ भी काम, अभी का मार्केट इंट्राडे वाला है नहीं, पोजिशनल वाला ये मार्केट है। Can we expect traps in OI, sir? all are trapped only ना सर। पंकज जी, पवन अरोरा जी, देखिए ये all are trapped only, these are all trapped made. Now are you seeing any trap over here? No, there is no trap. Only when the price comes down to this will get back shifted. Right now strongest level, see, it's Tata Motors there. Look at the auto index. Now if you are fearing worried, you need to check auto index. Auto index is at support. How can Tata Motors go down if auto index at revisiting in strongest area? Strongest breakout, strongest support. Resistance becomes support. If auto is at support, Tata Motors is also support. Maruti is also at gaining support. The two big players in the auto industry. How can the auto industry go down? Support. Let me remove this because I have. Now look at this. It's support only. Support. No. Gone up. Resistance found. Resistance found. Come back. Why the price is not moving down? It is showing the volume is very less. Now be very careful when the volumes are very less, because it has the same pattern made over here. If you please clearly see, same pattern. 1, 2, 3. Same seller. 1, 2, 3. Supposingly, if we have a very big candle tomorrow, boom, 200-300 points. सर इसमें जैसे अपने ट्रेडिशनल वे में जैसे देखते हैं चार्ट, जैसे कि अभी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस बिकेम स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, जैसे ऑटो इंडेक्स में वहां से फिर 3 बार सपोर्ट, मतलब एक बार उसके नजदीक आ चुका है, 3 बार वीक टाइप बना दी, तो उसमें वैसा देखना है क्या कि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया है, और अगर ये अभी ब्रेकडाउन किया तो वैसा देखना है क्या, या नहीं ऐसा नहीं देखना है कि देखो कंट्रोल किसके पास है अभी। Sir, I have a question, sir. रिसेंसी बायस सेलर का। Sir, I have a question. See, basically, I am doing a course from Avdut Sate for this technical analysis. And we have been taught to use few indicators like MACD, stochastic, Bollinger Bands, HA candles. So, I mean, as per what you are showing, we are majorly concerned with the OI and the support resistance, right? Right. So basically, madam, I'll tell you something. Indicators will lead price, or price will lead indicator.
price will lead. So price movement is major what we have Absolutely, to follow. Right? absolutely. तो क्या Yeah. है, आप इंडिकेटर से ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर कैन असिस्ट यू. So many good indicators like RSI, so many good RSI, indicators like MACD, ठीक है, relative strength, ये सब रहेंगे. मतलब you will get all these indicators, but indicator will only indicate. It can never lead. They are always lagging only. ठीक है. Okay. You can, Yeah. and if you want, see, I'll tell you after this topic. The next topic is if you use only just moving averages. Okay, moving average. EMA. Yeah. EMA. Now look at this. We have a 9 moving average. Okay. Now many people don't know how to use 9 moving average. 9 moving average is the leading average to say that market is falling or the stock is going into sell mode. First sign of either build up or either correction, crack. First sign. Let me show you this. Okay. If you just follow this, first sign, see the gap. First sign. This was pull. See the gap. Gap shorten. It has not left. So again came back to the channel. Gap shorten. Boom. Okay. Now completely below 9. This is the first indicator. If someone wants to know where the cracking is done. Now look at this Nifty. I was going to take this. किसी को कुछ पता नहीं है तो see. First up. Just follow this ना. Extra आपको अच्छा लगेगा. Just follow this gap. Whenever you see a gap, there is something happening. See, jolted but came back. Very close, but closed. It has to click. See, now it is completely down. You can exit over here, na? This will always show in live market here. Okay. Now, for me, if it is to be bullish, it has to come down to 22,200. Now look at Tata Motors. If you have taken supposedly rally, railway का बहुत rally हुआ था. Let me show you Railtel. ठीक है. See, very quick here. Someone who is aggressive, take. You know the strongest resistance, no? Who is in control? The control was here. Control shifted to buyers. Now from 400 to 489. Good amount. पैसा अच्छा बना सब लोगों का. ठीक है. Now someone who's entered at 400. Now here it cracked. इधर क्रैक हो गया. इधर मान लो इधर छोड़ दिया. तो भी 14 रुपए लेके निकले आप. Right now, you know you can re-enter at double bottom. Seller के पास control है. Price is not going down. बोलो. Will I enter or not? I will enter. Why? There is a buyer over here. No? He will take care of all my orders. यार मेरा 1000 quantity इसका 25-30,000 40,000 quantity 2 lakh quantity 6 lakh quantity. This guy has got many quantity. No? 1st June, 1st Jan. Just check 1st Jan ना Railtel. किसके पास control? Railtel Corporation. Look for big bulls. Who has entered? Look for February. This was January. Na? Look at January. How much people have? Why will the price will not go down? Look at this. अंदर पुदीना के अंदर देख. Quant में how many quantities? 5,96,000. 119 lakhs, 59 lakhs. इतना सारा quantity add किया है उसमें price थोड़ी जाएगा. They will take care of all the this thing ना. As I said, 1 rupees movement, we need 5 lakhs quantity. He will take care. It has come to his zone. The price has to defend. After that, there is no volume. All buyers. So to keep simple things, please follow. If you are very afraid, please to exit, timely exit, follow 9. If you want reversals, follow 27. लिख लेना कहीं पे 27. ठीक है. Reversals, long reversals, pull back reversals, upside. तोड़ दिया नीचे गया वापस. Reversals. Look for reversals. 27 is for reversal. 27 days.
if you want solid traction, the dynamic 50 MA will always support. Price will come, take support at 50, move up. When the 50 is broken, exit fully. Portfolio or a small trader should not be once it breaks 50. Absolutely, Jen. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 broke. Exit. इधर लिया तो भी इधर थोड़ा लॉस हो, ठीक है, whatever, कहीं से भी, टाटा मोटर्स लो, किधर भी लो, 50 को ध्यान रखो. 50 is the ultimate king of support is 50, and ultimate queen is 200. Look at this: support, upside gap, support gap. The more the gap, the more the price action. 90 degrees gap जिधर आया तो देखने का जरूरत ही नहीं है, बड़ा सिंपल रखो अपने आप को. Over complication leads to paralysis. Simple thing. See, price gap. Now 50 is here, 907. Why I said 900 पे लेना है? 50 भी उधर है, buyer भी उधर है, OI भी उधर है. बोलो. प्रदीप सर और कुछ इसके अंदर? Watch the video multiple times. I'm always there. Pradeep sir is always there to guide you. कभी भी call करो. Just analyze Z sir, Z में यार मैं बहुत फंसा हूँ, तो मेरे दुख पे आपने और Yes bank also. एक मिनट जी में देखने दीजिए पहले. मतलब yes bank, do you think it will एक fall मिनट रुकिए ना, पहले further जी को करने दो, फिर बाद में यस बैंक को बात करना. पहले जी में बोलिएगा. देखिए जी का देखिए. जी में पहले से ही ये टॉप आउट हो गया था के ऊपर, यहाँ से ये टॉप आउट था. लेकिन जी में क्या है, एक ट्राई किया जी ने इसको ब्रेक करने का, बट द सेलर वाज पावरफुल. दिस इज द पावर ऑफ द सेलर. ठीक है, द सेलर एट 210, द जनवरी सेलर डिड नॉट लेट द प्राइस मूव अप. So, एक ट्राई, दो ट्राई, तीन ट्राई, चार ट्राई नीचे. नाउ इट इज ट्रेडिंग बिलो इस कैपेसिटी नीचे. द प्राइस tried to move in this channel but it failed. We need to see next week. और कोई मेजर प्लेयर भी नहीं है. इट्स इन बैन आल्सो. बैन में है, और बैन तभी खोलता है जब ऑपरेटर चाहेगा. ऑपरेटर नहीं चाहेगा तो बैन ही नहीं खोलेगा. एब्सोल्युटली ऑपरेटर चाहेगा, क्योंकि वो आ ही रहा है. देखो एक है 130 पे खड़ा है, उसके सिग्निफिकेंट कोई नहीं है. 130 पे खड़ा है. नाउ प्राइस कम्स टू 130, बहुत नजदीक है. 10 रुपया मुश्किल है आना, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते. वो ले आएगा, कोई भरोसा नहीं है. हाँ, नहीं आएगा क्योंकि न्यूज बेस्ड स्टॉक है ना. 130 देखो कैसा है, मंथली में जाओगे तो दिखेगा आपको. मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ये है मेरे को अभी पता जी में क्या लग रहा है. जी शुड नॉट बिकम लाइक योर जेट एयरवेज. दोनों के हाई फ्लायर हैं, दोनों के प्रमोटर चोर हैं. अब पता नहीं अगर इनका अंदर से कुछ और बहुत ज्यादा इन्होंने कुछ फ्रॉड वॉड कर रखे हैं, तो हो सकता है ये भी जो है आपका जेट एयरवेज टाइप गोयल साहब का एक जो शेयर बन जाए. ये एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है अभी, क्योंकि जेट भी बहुत अच्छा चलता था, फ्लाइट्स बहुत अच्छी थी, और सडनली एक दिन बंद हो गई वो. जी का भी वही हाल है. अगर घर में पैसा ही नहीं होगा, सारा पैसा अगर आपने निकाल लिया है, तब तो ये क्या हो सकता है, साला 10 रुपए पे भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है इसका. ऐसा तो नहीं होगा सर, लेकिन एनएलसीटी में तो रिलायंस अदानी बाई कर लेगा फिर. अरे वो सब हम लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं. जी बाई, वो रिलायंस बाई कर लेगा, डिज्नी बाई कर लेगा, फलाना बाई कर लेगा. लेकिन अगर कुछ है ही नहीं उसके पास कुछ है ही नहीं, मान लीजिए. नहीं, मेरे को एक एप्रीहेंशन लग रहा है. आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसा होगा. अब जब जेट एयरवेज चलता था क्या था, इतना बढ़िया फ्लाइट थी, इतनी बढ़िया एयर होस्टेसेस थी, इतना बढ़िया काम होता था, क्या बढ़िया था जेट एयरवेज का. सेम ट्रेंड सर. सेम सडनली वनडे में जो है वो वाला पता चला था, वो तो कंपनी बंद हो गई. अरे जेट एयरवेज साला जो फेल हो सकता है क्या, तो जी क्यों नहीं हो सकता. ऑपरेटर दोनों ही चोर हैं, मतलब दोनों के ही प्रमोटर चोर हैं बिल्कुल. अभी तो प्राइस हाई है सर एक्चुअली. किसका बाई का प्राइस नहीं. किसका अभी इसको आने दो सर. एक चीज है, अगर 153 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो वापस ये 209 आएगा. क्योंकि एक मैं पॉजिटिव चीज देख रहा हूँ, जो 50 में एक जगह पे खड़ा था, 50 में ट्रैक उसको आ रहा है, वापस ट्रैक कर रहा है. देखो जब भी कोई 50 में स्टॉक के प्राइस को ट्रैक करने आया ना, तो ये एक मूविंग एवरेज का सीक्रेट है.
जो जेम्स मर्फी और बड़े बड़े जो एड सिक्योटा वगैरह यूज करते थे, वो क्या करते थे, मूविंग एवरेज जब जो भी कोई मूविंग एवरेज हक करके चले, मतलब कैंडल को किस करे, बहुत क्लोज लूपिंग चले, उसको बिल्कुल नजदीक नजदीक जाए, तो देयर इज अ मूव अबाउट टू कम। ठीक है, देयर इज अ मूव अबाउट टू कम। व्हेनेवर यू सी गैप, कभी भी गैप दिखता है आपको, ये मूव ऊपर का ही रहेगा। अगर ये गैप अगर ऊपर के टाइप में है तो बड़ा मूव आने का चांसेस है। देखो ये बड़ा मूव है, ऐसे में रखूंगा तो बहुत कम दिखेगा गैप को, ऐसे में रखूंगा ना बहुत बड़ा मूव है, 90 डिग्रीज मूव है। लेकिन देखो सडनली क्या आया, इधर आने के बाद एक साथ चिपक चिपक के चलने लगा, मतलब टैंडम है, मतलब इतना कुछ बड़ा मूव नहीं आएगा। ये पूरा जोन ऐसा था, ठीक है, ये पूरा जोन ऐसा था। अगर कोई इंडिकेटिव ट्रेडर है, अगर वो दिखता है इस चीज को, वो कभी पोजीशन नहीं लेगा, इधर ही छोड़ देगा, वो लॉस बुक करेगा। लेकिन हम है ट्रैप्ड है, हमारा एवरेज 217 का है, ठीक है। और मैं इसको पोजिशनल लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे डिज्नी और जियो आएगा ना, इसको भी अदानी ग्रुप भी मैं कम कर सकता, लेकिन ऐसे रूमर्स है कि बहुत जल्दी अमालगमेशन है ना, तो चलेगा तो 300 भी चला जाएगा ये 3-7 दिन के अंदर। बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल वो तो है, बिल्कुल चला जाएगा सर। और बड़े बड़े डील्स भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि डील्स नहीं है, सम गुड डील्स आर गोइंग ऑन इन जील। सो मैं मान के चलता हूँ कि स्टॉक जो है अपने एवरेजेस पे तो है ही, लेकिन बहुत अच्छे डील्स भी इसके अंदर आ रहे हैं। नहीं कंटेंट तो इसका अच्छा है ही है, खैर जी एज अ चैनल इज नॉट अ बैड चैनल, इट्स अ गुड बुके ऑफ चैनल्स। तो विद द इलेक्शन एंड विद द ऑल एवरीथिंग, सो रेवेन्यू तो इनका बढ़ेगा काफी, बट प्रमोटर का कोई भरोसा नहीं है कि प्रमोटर क्या कर रहा है इसके। मैं आपको बोलता हूँ, जील में बड़े प्लेयर हम जब ट्रैक करते हैं तो हमको ग्रेविटन है, देखो इन लोगों ने, सब लोगों ने 194 पे परचेस किया है, तो अच्छा, कम क्वांटिटी नहीं है सर, हाँ, है ना। आप क्वांटिटी देखो, 194 पे 9 फरवरी को परचेस किया, 9 फरवरी को सारे मेजर डील्स हुए, रीति ने, ग्रेविटन ने, बहुत सारे लोगों ने परचेस किया। अब ये लोग फंड हाउसेस है ना, ये लोग परचेस करके, ये परचेस करके ये अपने क्लाइंट्स को सेल करते हैं, मतलब जैसे 50 करोड़, 50,000 करोड़ के ये लोग का ईओएम है, तो ये लोग खुद नहीं परचेस करके तुरंत इनको अपने क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर देयर बैलेंस। तो अच्छा। ये लोग सर पागल नहीं है कि इन लोगों ने एक सर्टेन लेवल पे लेके तो रखा ये है, जो दो इन एंट्री लोगों दिखा ने रहे हैं परचेज और सेल का, मतलब ये है कि उन्होंने परचेज करके आगे उनको क्लाइंट को दे दिया। एब्सोल्युटली सर, देखिए ये तो लोग क्या आर्बिट्रेज नहीं करते है, हैं, ये आर्बिट्रेज वाले नहीं है। नहीं 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 नहीं, आर्बिट्रेज नहीं है इसमें। क्या रहता ओ, है कि इनके पास बहुत, जैसे पीएमएस है, अच्छा, आपने आईसीआईसीआई पीएमएस को दे दिया, ठीक है, आपका फंड 10 करोड़ का है, मेरा फंड 50 लाख का है, मैंडेट अपना 50 लाख रुपए होना चाहिए पीएमएस का, ठीक है, हाँ, तो मेरे को भी स्टॉक 50 लाख के हिसाब से दोगे ना आप, मेरे वेटेज के हिसाब से, राइट, हाँ, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर ये लोग बाई करते हैं तो उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो कभी इतना सर, इतना बड़ा क्वांटिटी एक दिन में आकर एक दिन में चला जाए, तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा सर, ओ, अच्छा 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 अच्छा। आप समझ रहे हो ना। मैं अगर हाँ, ऐसे ही करने लगा तो मैं तो मैनिपुलेशन का भी बाप निकलूंगा ना। हम्म, इतना बड़े क्वांटिटी में एक दिन में बाई किया और एक ही दिन में, सेकेंडली और भी कोई भी प्राइस 1 रुपए 1 पैसे में मैं सेल कर देता हूँ, क्या मिलेगा मेरे को हाँ, टैक्सेशन के सिवाय, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं देख रहा हूँ सारे ऑर्डर ब्लॉक्स 170 के आसपास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स, मतलब बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स है जील में। सो लेट्स वेट। अभी मेरे को अभी देखो आप, रिसेंट 21 फरवरी को 170 पे बहुत सारा ऑर्डर मिला था। 170 मतलब आप प्राइस देखो, ये जोन है प्राइस का, ये वाला 170 के आसपास। तो अटेम्प्ट किया था, लेकिन यहाँ से ऊपर गया था, लेकिन देखो आ गया अगर तो बहुत अच्छा चला जाएगा, बट इट हैज टू कम टू दिस चैनल। बट एक चीज भी देखिए ना, 194 पे डील हुआ, 170 आ गया, 170 पे डील हुआ, 140 आ गया। इसका मतलब ऑपरेटर इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस फेलो। ये एज सी आई सेड, ऑपरेटर ही सब कुछ है, आपको ऑपरेटर के इंस्टीट्यूशनल डिकोड करना आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप उसको डिकोड कर लोगे तो आप टॉप्स पे बाई नहीं करोगे, एग्जिट करोगे और बॉटम पे, नियर बॉटम पे बाई करोगे। नहीं तो ये सब लोग क्या बेवकूफ है जो 194 में 170 में जिन्होंने बाई किया ऐसा 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 नहीं है सर। वो लोग क्या फिर करते हैं, अभी अभी वो क्या करते हैं, आप आपका जील का वेटेज उनका कितना है वो देखना है, नॉट इवन 1% ना सर। आपको और मेरा पोर्टफोलियो में 30% 40% हो सकता है, ठीक है।
जो 50,000 1 लाख करोड़ लेके बैठे हैं उनके लिए तो जील अगर 5 लाख क्वांटिटी बाई किया एट 190 तो उनका तो परसेंटेज देखो ना आप। अच्छा आपको परसेंटेज से मतलब है ना, वेटेज हाँ कितना हाँ हो रहा है वो देखना है आपको। ये सबसे आपको और मेरे को लेना देना है, आपको और मेरे को लेना देना है जील में कितना। लेकिन देखो इसने इसने ये ऐसे जील में कौन निकले, कोई निकला नहीं है अभी तक। अगर कोई निकला भी होगा तो भी वो वेटेज के हिसाब से निकला होगा। अब बिग बुल्स में अगर आप एमएफ होल्डिंग में देखो, जील को किसने खाली किया है? आईसीआईसीआई ये ने किया था आईसीआईसी हाँ प्रूडेंशियल ने खाली हाँ किया है। हाँ कितना आईसीआईसीआई परसेंट ने सर? 3%। अच्छा 3%। ठीक, उसके सामने एसबीआई ने 25% बाई किया है, आपका टाटा ने 60% बाई किया है। बट ये सब आर्बिट्रेज वाले हैं। नहीं नहीं, आर्बिट्रेज नहीं, होल्डिंग बढ़ाते सर, दीज आर एमएफ, वो होल्डिंग बढ़ाएंगे। सिर्फ फंड का नाम है हाँ, आर्बिट्रेज फंड का नाम है, लेकिन इन हाँ लोगों ने होल्डिंग किया है, होल्डिंग में लिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड ने 43%, यानी कि आप 10%, 33%, पहले 10% था, 33% बढ़ाया इन लोगों ने फेब्रुवरी में। अरे बोलो। कमाल हो गया, कोटक ने इतना ले लिया है। एब्सोल्युटली, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप इसको आप वो मत करो, राइट ऑफ मत करो। गुड स्टॉक्स विद ग्रेट वैल्यूएशंस, उसका वो जबरदस्त रहेगा। अभी तो सिर्फ वो कैटेगरी में आया नहीं है लॉन्ग कवर में, इसकी वॉल्यूम नहीं है, इसलिए अगर वॉल्यूम आ गया जिस दिन तो बहुत जबरदस्त भाग सकता है ये। तो Can I एक please न्यूज ask भी a question? पॉजिटिव आ गया तो अच्छा, एक भी न्यूज अच्छा आ गया तो ये तो 200 तो एक दो सर आप कवर मानोगे करेगा। नहीं, एलआईसी, वैनगार्ड, नॉर्वे की गवर्नमेंट पेंशन फंड, ये सब इतने खतरनाक लोग हैं कि ये लोग का जो नेटवर्क है, हाँ स्टॉक पिकिंग करने की जो काबिलियत है, हम मतलब उनको मैच भी नहीं कर सकते। हम मच्छर से भी एक लेवल और नीचे। यार ठीक है, हम मच्छर से भी एक लेवल और नीचे। तो हमें ये सब जरूरत नहीं है सर, ये सब एनालाइज ओवर एनालाइज करके पैरालिसिस करने का। किसी ने एंट्री किया है तो उसने सोच समझ के किया है, आपको राइट सिर्फ राइट डिकोड करना है इसके ऊपर। ठीक है, यही है हमारे पास, मेरे पास इसके सिवाय मैं आपको और भी बहुत सारा चीज दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ काम नहीं है। सर इसमें तो आप आपको और मेरे को, स्टॉप लॉस जैसा नहीं रखते? पर सर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है, मैं फंस गया। फिर मैंने एवरेज किया, मैं और फंस गया। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है कि लास्ट में 10 महीने में मैंने अगर कुछ कमाया है, अगर जील मेरा ₹1,00,000 ₹2,00,000 ले जा रहा है, तो मेरे को उसको एग्जिट करके बुक कर देना चाहिए लॉस। लेकिन मैं अभी नहीं लॉस बुक करूंगा। मैं क्या करूंगा, मार्च के एंड में, जैसे ये मार्च खत्म होने का आएगा 2 दिन के पहले ही बुक कर दूंगा, और फिर अप्रैल में ले लूंगा, तो मेरा टैक्स हार्वेस्टिंग हो जाए। सही है ना? मैं अभी क्यों बेचूंगा, मैं बीच में क्यों बेचूंगा, मैं बॉटम में बेचूंगा, मेरे को टैक्स नहीं लगेगा। राइट दूसरे दिन खरीद लूंगा ना। मतलब मैं फंसा ही हूं, तो फिर मैं क्यों इतना जल्दबाजी करूं? समझ आपका रहे? टेलीग्राम ग्रुप दिखना है सर, सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप। वो मैंने डाला ना लिंक अभी ग्रुप इसमें चैट में। हाँ हाँ, मैं वो लास्ट डाला में है भी आपको, नहीं नहीं मैंने डाला है ना, मैंने इसमें जस्ट हाँ देखो हाँ, भी ओके, मैसेज मैंने डाला है लिंक। हाँ हाँ हाँ। Can I इसमें सर please और ask a कुछ हो तो, question? हाँ हाँ बोलिए बिल्कुल भैया। बिल्कुल, ये टोमेटो। Yes. मैं फिर डाल दे रहा हूँ लिंक ये। जस्ट देखिए अभी फिर लिंक डाला है मैंने। ओके ठीक है Mr. हाँ Pillai, हाँ can I या ask a question, please? या go टेल मी। Yeah, thank you very much. This has been quite insightful and quite an eye-opener, this session. My question is, I'm mostly trading in the US markets. So these ओके, strategies, can they be applied in the US markets as well? So, absolutely you can do, absolutely. right. Also, some of the tools that you mentioned are not, like available for the US market. I think like the one that you mentioned just now, the Sensible, it's mostly for Indian securities. So, is there Correct, some correct. similar tool for the US market? So Prime, you can use Prime XBT, Optima. I will send you. मैं प्रदीप सर को दे दूंगा, we can, क्योंकि Thank मैं you. यूएस मार्केट में और उनका ट्रेड इंटरेक्टिव नहीं ब्रोकर करता। जो है ना, हाँ, इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव ब्रोकर भी है, उसके पास इंटरेक्टिव भी बहुत है। जबरदस्त टूल्स हैं। हमारे ओके, सारे जो इंडिया वाले हैं ना उसी से कॉपी करते हैं। जस्ट गो टू Got it. इंटरेक्टिव ब्रोकर। दे हैव ऑफिस इवन इन मुंबई आल्सो, so you can open an account in your NSE as well as for US account through interactive broker. This is one of the leading broker of US. अच्छा, उसके पहले अभी एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि how do you trade from sitting in India in the US stock? That is what we wanted to know. Our Yes, number of member का sir. एक, so can you Yes. just explain in 2 minutes? Yeah, बोलिए। Yes, sir. Sorry, I'm based in Singapore right now. I'm not Oh, sitting in India.
but I'm attending this on behalf of my father, who's sitting in India, and I did take guidance from him. So he had very nice things to say about you, Mr. Kothari, and that's why I'm attending this session from a learning perspective. Okay. तो बेसिकली ये यूएस ट्रेडिंग मतलब इंडिया से होता है, हो सकता है? इंडिया से भी होता है, बिल्कुल होता है सर। I'm not aware. I can tell इंडिया मनी, आप अगर इंडिया मनी सब्सक्राइब कर लेते हो, इंड मनी वाला ना, इंड मनी कर देते हो, तो आप यूएस में स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और सेकेंडली प्रदीप सर, मैं ये बोलना चाहूंगा, जो आपने पूछा था कि टूल कौन सा है, तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर गो चार्टिंग। गो चार्टिंग मतलब इसके अंदर क्या है, आप यूएस के स्टॉक्स ट्रैक कर सकते हो, ऑर्डर्स देख सकते हो, कौन कितना, मतलब ये, मतलब मैं ये इंडेक्स के लिए ट्रेड करता हूँ। तो ट्रेडिंग वो में भी रहेगा ना, ट्रेडिंग वो में भी रहेगा तो फिर सर ट्रेडिंग व्यू सर बहुत महंगा है। अभी तो इतना सस्ता मिलता है आपका ब्लैक फ्राइडे में। ब्लैक फ्राइडे में द प्रीमियम, द मोस्ट एक्सपेंसिव वाज ओनली 20,000 रुपीज। परफेक्ट सर, तो ये जो है ना 11,000 में मिलता है। अच्छा, और ट्रेडिंग व्यू का बाप है ये। अच्छा, अगर आप कोई ट्रेड प्रॉपरली करना चाहते हैं ना गो चार्टिंग में, उसका बाप है ये, क्योंकि ये टिक बाय टिक एब्सोल्युटली कौन से लेवल पे क्या चल रहा है ना, सब मालूम पड़ता है। जिसको यूज करना आना चाहिए, वरना उसके लिए वो 13,000 भी वेस्ट। अच्छा, है ना, तो आप कोई भी ले सकते हो Amazon। Yes, great insights. Once again, thank you very much. My question is that these two strategies which you have described, in what scenarios can they backfire, and what has been your experience in terms of success rate with these two strategies in the last, like 1 or 2 years you've been trading? So basically what we are doing is, from the last 1 year, we have been using swing trading. Okay, and the success rate is around 85 to 90%. Okay, only 2 stocks which we have been trapped fully. One is Zeal. Okay. Second one, which we are trapped recently, is BEL. Abhi recently. BEL. बस ये अभी ट्रैप हुआ नहीं है। बस this is not trapped. This was a trap, but it came very fast above the channel. BML का भी जो बता रहे हैं ना, एक मिनट पहले जी, the BML is very similar to all the PSU stock, huh? Absolutely, so absolutely. One has to be very, very careful, huh? PSU stock cannot grow 2 times, 3 times in 1 year. ये सारा ऑपरेटर्स और न्यूज वालों ने बनाया है, और PSU शेयर्स गिरेंगे ही गिरेंगे। Absolutely, so just my message to everybody: be very careful in the PSU stock. Absolutely. Great point. So, just to summarize, in what scenario, Mr. Pillai, the strategies can backfire? If we have to, find moral of the story, then what can we say in which scenarios the strategy can fail? 85% is a very good rate, but still we should, be careful about that 15% of the times when it may not work. So what would you say? So basically, when you first thing, you should always understand the PSU, PSC, whatever the sector that you are tracking, you should buy very close to the reversal. See, now someone who's been trapped at this level in PSU bands, right now it is a level to buy. Why? After 23rd November was the last time 50 moving average, which is considered one of the king of reversals for support. This is the first time after 24th November it has been tested. Okay. So someone like me who's waiting to enter into PSU can enter with 30%. See, I can always be trapped, but market structure, na? This can give you a pretty good insight. This is the market structure. In 2 minutes, someone who is not a CMT, chartered market technician, can become a CMT in just 2 minutes. Right. Without any doing like this. Right. Any other corner cases where you think the strategy could fail? Any other corner cases based on your experience? No, the only thing is that whenever you find this 50 breaking and the near support breaking, it can come down and retrace. And in so Z right also. Now, Z also. See, Z is not breaking due to structure. Z is breaking due to news. First, the news was of Sony merger.
Okay. Correct. Secondly, then exits of top management. So Z is a particular different case than this thing. Okay. This is very much different. Okay. So moral of the story is, apart from charts and trends, we also need to be aware of the news and be on top of the news to avoid Absolutely. anything. Money control, I will share a link to Pradeep sir. Right. One of the awesome feature that I manage is the sector scan. फ्री में पड़ा है, किसी को यूज नहीं करना आता. फ्री में पड़ा है ना, people look for paid things. ठीक है, money control पे. ठीक है. Right. अब now this is a free thing ना. Right. है ना, free thing. I can go and check everything. Yes. Now let us see. Nifty. Someone who wants to check Nifty Bank. Everything will there ना. आपको प्राइस कितना आया, लो कितना है, वॉल्यूम कितना है, एनालिसिस कितना और टेक्निक कितना. It is very much free, but no one has the time to go and check small, mid, large sectors. Everything is free. I'll send you this send this link. Last question, sir. What about Yahoo Finance? Have you tried and used that? I have not used it because again Yahoo is आउटडेटेड हो गया अभी वो. हाँ बिल्कुल, और उसका प्राइस नहीं है. आउटडेटेड है. Please use money control. Please use XBT Prime. These are all live. Investing.com best. Okay. Global, Thank you, local sir. दोनों market click कर सकते हैं. Some great insights today. Thank you very much for sharing. एक ना माइक्रोसॉफ्ट ने नया निकाला है, which I say कि 100% of the public is not aware. माइक्रोसॉफ्ट का जो अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 जो है, उसके अंदर जो आपका डेटा आ रहा है, it is so quick even the Ferrari will you will beat the Ferrari also. Super. इतना जबरदस्त उसमें डेटा अपडेशन आता है. तो लेकिन उसके लिए यू मस्ट हैव ऑफिस 365 एंड ऑफिस 365 का मैंने अपने ग्रुप्स में डाला हुआ है कि उसको फ्री कैसे इंस्टॉल करना है. अदरवाइज वो पेड होता है, उसका एनुअल करीब 7-8 हजार रुपए लगता है ऑफिस 365 का. बट इफ यू ज्वाइन एज अ डेवलपर देन यू गेट अ फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफिशियली फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट. और वो लगा के आप उसमें अगर पोर्टफोलियो का मॉनिटरिंग करो, ये सारे इंडाइसेस का मॉनिटरिंग करो, वर्ल्ड ओवर स्टॉक का मॉनिटरिंग करो, इट इज सुपर फास्ट है. मतलब 2 सेकंड के अंदर आपको पूरे वर्ल्ड का डेटा आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट आपको दे रहा है. अब यू मस्ट ट्राई, पब्लिक मस्ट ट्राई इट. गूगल से तो मतलब 1000 गुना आगे है वो. गूगल का जो हमारा नहीं है था, गूगल पोर्टफोलियो में जो देखते हैं ये गूगल के अंदर सारी शीट्स का रिक्वेस्ट शू, तो आप ऑफिस 365 में ट्राई किए, जबरदस्त है. तो जस्ट आई वांटेड टू से. Are you referring to Excel or Excel 365? Excel 365. मोहित सर ने ट्राई किया होगा सर. है क्या? मोहित सर ने ट्राई किया होगा सर. मोहित ले सकते. मोहित ने नहीं, ये तो फ्री में मैंने अपने ग्रुप में डाला हुआ, कैसे फ्री इंस्टॉल करते हैं इसको. यू हैव टू जॉइन. मोहित, आई डोंट नो हु इज मोहित. आप खुद अपना इंस्टॉल करो ना अपने लैपटॉप के अंदर 365 को एज ए फ्री, एंड देन उसमें जाके आप ये इसका पोर्टफोलियो बनाओ अपने स्टॉक्स का, इंडाइसेस का, सबका. जबरदस्त आपको जो है इंफॉर्मेशन आपको सेकंड्स में मिलता है. मतलब दैट इज जस्ट आई वांटेड टू से. चलिए आगे चलिए सर. हाँ, ये लोग ये आप यस बैंक का पूछ रहे थे. या यू कैन टेल अबाउट यस बैंक. मैडम कोई पूछ रहे थे यस बैंक का. या मैडम है. So lastly, I have a question. Okay, if you allow me. So once you finish that. एक मिनट यस बैंक को करने दो, फिर उसके बाद में फिर आपका क्वेश्चन ले लेंगे. चलिए बोलिए. हाँ, यस बैंक का बताइए. हाँ देखिए, यस बैंक अगेन अपने सॉलिड डिमांड जोन पे खड़ा है, और लास्ट टाइम पे 50 पे आया था, बाउंस मिला था. अब ये 50 पे आने का तैयारी है. अभी अगर मान लो कि 25 के ऊपर आकर अगर ये ट्रेड करने लगे, साइडवेज होने लगे, ये वापस बहुत बड़ी तेजी में आ सकता है. इनकी जो रैली शुरू हुई थी वो इसी लेवल पे शुरू हुई थी सभी. ये लेवल सारी लेवल्स ये थी. ठीक है, तो बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यस बैंक डबल बॉटम बना है, और यहाँ पे भी सेम है. इसके पास कंट्रोल है. ये भाई साहब डिफेंड किया है इन्होंने. तो बेसिकली पूरी डिमांड जोन यहाँ पे. तो यस बैंक मुझे ऐसा लग रहा है मिस नहीं करना चाहिए, और आप अपना 3% to 5% अपना पोर्टफोलियो यस बैंक में लगा सकते हैं. ठीक है, और ये पोजिशनल ही रहेगा. अगर आपको 30% चाहिए तो आराम से ये दे सकता है 30% यहाँ तक. Sir, Yes Bank is in the news now for promoters, and I mean, so in long run this should be very good, right? Absolutely. See, you are buying a bank, and also there are
many takers. Yes Bank में there are many bulk deals done on a recent phase. So basically, you should not miss Yes Bank. The purchase was Morgan Stanley, which is a Singapore PT. मतलब जबरदस्त purchase किया है at a rate of 27 rupees. ठीक है. So basically, 27 Share India Securities 22 rupees, 23 rupees. मतलब 20 has almost like major people, like big players have come in on 27, 30 rupees. Riti is a big player. They are almost into value pickings. Quant is a big player. They're into value pickings. So please don't miss it. ये 20 रुपए में तो बहुत अच्छा है. It is better than all those penny stocks. You're buying Sir, the I bank. was holding it from 12 rupees and then it was not moving like. So at 24, I sold off 50%. And then it suddenly, went to 30 and I added back that. I was holding Yes. from 12 rupees. But try to hold it and take it above. Now you know above. There is a Actually, surge. SBI का बड़ा strong चल रहा है कि Absolutely. SBI में take over major holding. That is the strong rumor. SBI भी ले रही है सर. उसको उनका एक न्यूज़ है HDFC बैंक का. अच्छा, okay. HDFC बैंक का एक न्यूज़ चल रहा है. If the news is on rumor, ठीक है. But अगर वो सही हो गया तो they can have some control in Yes Bank. Not all control. Yeah. But stock buys आप देखो, it is almost at a very great level. Okay. At a very great level. So अभी 2-3 दिन में गिरा होगा ये. 2-3 दिन में तो गिरा होगा ना. I'm not tracking. Absolutely गिरा है. Absolutely गिरा है. अच्छा. तो you can buy as a SIP और क्या है? Absolutely. और देखिए ये 230 दिन it is trading in a range. ठीक है. 230 दिन का एवरेज आप अगर देखेंगे, 200 मूविंग डेज का एवरेज अगर देखें तो ये आसपास ही है. 250 ट्रेडिंग डेज होते हैं इंडिया में, और 250 ट्रेडिंग डेज में अगर कोई स्टॉक आकर बाउंस करता है और वापस आता है तो इट इज एब्सोल्युटली जेम. प्लीज डोंट मिस दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके. अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है ये? अभी कितने में? ये 20 रुपए 23 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है सर. ओके. अगर ये यहाँ आ गया ना, अगर मैं देख रहा हूँ इसको, अगर इसकी रैली यहाँ से शुरू हुई थी और अगर उसने यहाँ पे ही टेस्ट किया है परसों के दिन, तो आप सोचो ये सेम जगह पे अगर ये आ सकता है, वॉट एवर यू सी ऑन योर लेफ्ट विल हैपन ऑन योर राइट. ठीक है. टेक्निकल एनालिसिस, वॉट एवर यू सी ऑन योर लेफ्ट, इफ फाउंड वेल at the same zone with good volumes, it will happen on your right. So I think so it will happen. Any more questions के आगे चले, क्योंकि इसी में ही अपना मेजर टाइम है. चलिए आगे चलिए. ओके. So मैंने आपको बताया प्राइस डिस्काउंट्स. मेरा खाना तैयार है, खाना है तो खा लो. मेरा एक काम करेगा. So there are three premises. अभी वो yes बैंक का बोल. हाँ बोलिए. मेरी म्यूट कर So दिया. there are three premises which a price action approach is based. So for me, market action discounts everything. So किसी ने मुझसे प्रदीप सर सवाल नहीं पूछा, ये 3 महीने का मार्केट स्ट्रक्चर में क्यों मार्क करवाता हूँ. सही बात है. हाँ, है ना. किसी ने नहीं पूछा ये क्या है, आपने 3 महीने का मार्क किया है, क्यों 5 महीने का मार्क नहीं किया है, क्यों 2 महीने का मार्क नहीं किया है. सो 3 महीने का इसलिए मार्क करता हूँ क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं. अच्छा. ठीक है. क्वार्टरली रिजल्ट के पहले ही प्राइस या तो भागते हैं या तो नीचे होते हैं. अगर भाग गए तो रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होता है प्राइस नीचे आती है. डिस्काउंट एवरीथिंग. आप देख लेना बैक टेस्ट करके. एग्रीड सर, एग्रीड. आई हैव सीन दिस. है ना. आप देख लेना, बैक टेस्ट करके देख लेना, जितने भी आपको बैक टेस्ट करने हैं देख लेना. उससे पहले ही रैली होगा क्योंकि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग. देखो ई जो लिखा है ना, ई, तो दैट इज अर्निंग. ये जो ई दिख रहा हो ना आप यहाँ पे, ई अर्निंग से. ठीक है. देखो अर्निंग से पहले ही ये रैली हो गया. ये अर्निंग है. ये अर्निंग जैसे ही आया फटाफट से ऊपर गया और फटाफट से सबको निपटा के बेस बनाया. किधर का बेस बनाया? जो अर्निंग का टॉप था ना, अर्निंग रिलीज का टॉप, उधर ही जाकर सपोर्ट लिया. These are all small thing. I cannot teach you in one go. It requires 4, 5 months, 6 months in depth to understand how the price dynamics works. Or I am just showing you how it works. You can even back test. Okay. So price अर्निंग वाले दिन टॉप फर्स्ट 15 मिनट में बना देता है सर.
नहीं, मैं कभी भी छोटे टाइम फ्रेम में सर ट्रेड ही नहीं करता। मेरे लिए टाइम फ्रेम डेली और मंथली का ही रहता है। सिर्फ मैं इंडेक्स में जो ट्रेड करता हूँ, आप मेरे चैनल में देखेंगे, इंडेक्स की ट्रेडिंग में 1 घंटे में लेवल मार्क करता हूँ और 5 मिनट में ट्रेड लेता हूँ। उसके सिवाय आपका मेरा कोई भी चार्ट, मेरे कोई भी लाइव ट्रेड्स, कोई भी लाइव एनालिसिस आपको छोटे टाइम फ्रेम में मिलेगा ही नहीं। क्योंकि मैं नॉइस, अभी आप सोचो कि मैं अगर 10 लाख रुपए से भी ट्रेड करता हूँ या 1 करोड़ से ट्रेड करता हूँ, मेरे को नॉइस नहीं चाहिए। अगर मैं नॉइस करूंगा ना तो मैं स्कैल्पर बनूंगा, ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, तो आप लंबे टाइम फ्रेम पे आइए, सही चीज आपको लंबे टाइम फ्रेम पे ही मिलेगी। सो अर्निंग पहले ही आपको मालूम पड़ जाएगा, ये 1 दिन पहले का ही है। ये 1 दिन का, ये इसने टॉप ब्रेक नहीं किया तो आपको घुसना नहीं है। आपको अगर ऊपर टॉप पे घुसेंगे, जो टीवी चैनल में दिख रहा है जी बिजनेस में, तो आपने बोला कि अर्निंग बहुत अच्छा है, ले लो करके क्या हुआ, 946 का 900 रुपए आ गया। 40 रुपए बहुत मायने रखते। ठीक है, उसके बाद सब लोगों ने अगर पुट लेना तो उसी दिन से नेक्स्ट डे से ही ऊपर गया। ठीक है, तो प्रदीप सर क्लियर है ना ये? हाँ, तो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग एंड मार्केट मूव्स इन ट्रेंड और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मतलब व्हाटएवर यू सी ऑन योर लेफ्ट विल हैपन ऑन योर राइट। जस्ट बी पेशेंस रखना है एंड यू नीड टू लुक फॉर सच स्मॉल थिंग्स। सेकेंडली, दिस वन स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो भी समराइज किया था वो इसका एक समरी है, जो भी हमने लर्न किया था। shift you need to understand the shift in supply and demand by who is in control. So if D is above S, मतलब demand is greater than supply, we are in bull market, correct? Or the stock is in bull market. If supply is less than demand, we are in bear market. So demand is less than supply, मतलब the supply is more strong, we are in bear market. If the demand and supply, what you see on your advanced decline basis, which has been posted by NSE or major broker also posted, we are in sideways market. So right now sideways market is gone. Now we are in reversal market. So sideways market was this. If you ask Tata Motors, this was a sideways market, like this: top, bottom, top, bottom, top, now directional. Now it has come on the same area. Now let it come, let the history repeat. Like let it trade over here like this, here like this, light, and we can see a reversal happening to 15% or 12%. Now for that 10%, 5% or 12% move, you should be studying this, not price ले लिया ऊपर गया breakout आया, नहीं. You should put your money at a technically strong levels, and that can be easily done by studying the daily charts. Correct? So the what we are doing is, fundamentals will not be able to help you in one go. Okay. Tata Motors fundamentally cannot deteriorate in 1 month, 2 months, 3 months, unless and until there is a bad ED raid, that trade technically can come down very fast within 1 minute also. A ED raid in Tata Motors, the price will come down 10%. Okay. Technical, you cannot understand right now. It will take time. So charts simply reflect the bullish or bearish psychology of the marketplace. You should understand whom are you following. Are you following a retail like me, or am I following a retail like you, or we should follow the retail like big players? Whenever we follow big players, only we will be able to make good money in trading or investing. Correct? Now read this, the same thing. Technical analysis, study of market action. It's us to do everything with human psychology. What we fear is what someone's gain. What someone gains is what we fear, and the history repeats. The charts that you can see is the buy and sell, fear and greed index. Correct. So what we do is identify the price pattern over the past 100 years. Now we cannot go and look back for 100 years. What I can look back is, price tends to follow maximum in 3 months. 3 months is enough. 3 months is enough to understand how the price works. 3 months is very much enough. Okay. So whatever you are seeing in 3 months, you will come to know. So this is the 3 months. What are you seeing in 3 months? Okay. Now, Pradeep sir, am I audible? No, am I clear? No?
Yes, sir. Yeah. No, yeah. So look at this. This is January, February, March. Now we are in March, but look at this. This is December. Now, first, by naked eyes only you can see the strongest hands. Naked eyes, कुछ चाहिए नहीं. देखो, buyer seller first. Small candle, a big volume followed by muted volumes. What do you indicate at the top? Please remember, whenever you see like structure like this, the move is not here, the move is here. There is a possibility of huge breakout. ये move अगर इधर होता छोटा छोटा तो मैं समझ सकता था कि it can come down. Yeah, I can predict it can come down, but it is moving very small with very less volume at top. Now, whenever it has a chance to break this seller control, look at the move. Almost 80-90% का मूव. हम इसको नहीं पकड़ सकते लिटरली, लेकिन what about 5%, 10%, 20%? We can, na? Till date, the area is not tested. It is here. This as a control, recent control here. Now at the same level, he has taken the control back. There was a seller. The buyer is more strong. It has taken a control back. So I don't do over analysis. I will stick to the superior order book price action. The future repetition will happen if your past is repeated. Okay, the patterns have worked well. I have made good money, and we are having almost every day live trading. We are teaching the same concept in depthly, तो वो work करता ही है. ठीक है. So accumulation, steady market, smart money buying. This is the area that we need to focus on. Public's participation जब भी आया है, whenever you see retail talking of stock, retail talking of index going up, further moving, that is where the operators are hearing them or hearing people like us कि सारे लोग bullish है. Let me give one jolt. ठीक है. Whenever you see retail fearing market is not good, FD is good, that is the time when smart money enters. Okay. So please pay attention to the market noises that you see on the charts, not on the media. Okay. So accumulation, public participation, distribution, smart money are highly. Whenever you see something, as I always say in my session, and here also I said, whenever you see a 90-degree movement, and why the 90-degree movement has stopped, just ask chart, क्यों stop किया आपने? You will come to know there is a seller base test हो रहा होगा. Like I said, ये ऊपर की इस टाइप में वॉल्यूम बना रहा है, तो देखो ये नीचे की टाइप में छोटे छोटे वॉल्यूम. That is where the price manipulation happen, na? See, gone. And I can give you hundreds of what I can give. You can also check hundreds of charts. It's 26% down at the same level. Okay. So go and back test. Go and test whether I am saying right, wrong, झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है. Check करो अपने आप. आप check करोगे तो पता चलेगा कि क्या बोल रहा था, order क्या होता है. ठीक है. I'm using nothing other than this. ठीक है. So हाँ. आपका ग्रुप में लाइव ट्रेड्स पोस्ट रहा है सर? हाँ, लाइव है ना, लाइव है अपने ग्रुप में. आप चेक कर सकते हैं. मैं आपको टेलीग्राम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. देखिए आप, ये टेक ट्रेड्स 365. 600 छोटा, सुबह तक 400-600. देखो बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे काम करते हैं. कभी आपको इसमें एनालिसिस में बहुत मजा है. मतलब आपको इनसाइट्स बहुत सारा मिल जाएगा. मैं सेक्टर का भी डालता हूँ, कौन सा सेक्टर. तो आपका बिजनेस मॉडल है इसमें टू द रिटेलर्स क्या है? नहीं, रिटेलर का बिजनेस मॉडल नहीं चला था सर. जो मेरे साथ सीखते हैं ना, उसको हम लोग वो लाइव ग्रुप में डालते हैं. देखिए एक ज्यादा तो बड़ा सिखाने का आपका फिर कोई कोर्स वगैरह है या आपका क्या system है? एब्सोल्युटली. अगर आप ऑर्डर सीखना चाहते हैं तो है. बाकी मैं उसके अंदर कुछ नहीं करता हूँ, मतलब किसी को टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ. देखिए ये मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग का है, 82 लोग ही है जो हमसे सीखते हैं, उसी को हम लोग डालते हैं. और जो हमारी एनालिसिस लेती है, जैसे मैंने आपको बताया BEL का, ठीक है, ये BEL है, मैं इसमें फंसा हूँ. ठीक है, ये
JNK बैंक मैंने परसों एग्जिट कर दिया। आपको मेरे फ्री ग्रुप में भी सेम चीज मिलेगा कि मैंने कल लास्ट मंथ 2,80,000 एग्जिट किया था लॉस लेके, और उसके पहले मेरा 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, उसके पहले 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, उसके पहले मैंने 12 लाख रुपए का लॉस लिया, उसके पहले मेरा 17 लाख रुपए का प्रॉफिट था। सब ट्रेड लाइव ही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। लेकिन ये ग्रुप में नहीं मिलेगा आपको। ये ग्रुप में सारे रिसर्च वाले ही ट्रेड्स गिरेंगे। मैं इसके अंदर बताता हूँ वॉल्यूम, प्राइस, मैं जो सिखाता हूँ और मैं जो ट्रेड करता हूँ वो अलग नहीं रहेगा, सब एक साथ ही रहेगा। तो आप वो फ्री ग्रुप में जाकर देख सकते हो, सब है उसके अंदर। तो आप बाकी कोई की भी ग्रुप के पेड ग्रुप है आपके? आप पेड नहीं, जो मेरे साथ सीखते हैं ना सर, नहीं तो उन्हीं को। सीखने का मेरे क्या पास तरीका कोई है? सपोज ये सीखना है तो क्या सिस्टम है आपका? सर, जिनको सीखना है ना सर, तो मैं 1 साल लगेगा उनको। 1 साल पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे साथ, उनको 1-to-1 आना पड़ेगा। ग्रुप में कोई भी टीचिंग नहीं रहेगा। और जिनको सीखना है सर, तो उनके चार्जेस रहता है, और वो चार्जेस 50,000 है साल का। 1-to-1 और वो यानी कि उनको सारे, अहमदाबाद आना है? अहमदाबाद आना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन ही सर। अच्छा, ऑनलाइन। ओके। तो क्या आप देखिए आप लेकिन ये सर, क्लासेस लेते हैं उसमें? हाँ ये लेता हूँ, लेकिन सर कैसा रहता है कि अगर आप मेरा जो फ्री वाला ग्रुप देखेंगे ना, हाँ। मेरा बहुत सारा बहुत जबरदस्त कंटेंट आपको वहां पे, किसी को पेड ज्वाइन ग्रुप करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, किसी को अगर फाइन ट्यून करना है सर, मेरे को कभी भी फोन करो। मैं सुबह 4 बजे से लेकर 11:30 तक रात को यही काम करता हूँ। आप मेरे को कभी भी फोन करें। मेरे ग्रुप में भी मैंने डाला हुआ है, फाइन ट्यून के लिए कोई भी कोर्स ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। फाइन ट्यून के लिए आपको समझाना होता है, आपकी साइकोलॉजी डेवलप करनी होती है, और आप क्या नहीं देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ वो आपको बताना है बस। ठीक है, फिर भी किसी को समझ में ना आए तो फिर आप आइए। तब तक आप इसको ही मेरे जो जो फ्री ग्रुप है वो अल्टीमेट है सर। वो कंटेंट ही इतना जबरदस्त है, क्योंकि बेसिकली हम लोग ट्रेनर नहीं है, हम ट्रेडर ही है। ठीक है, आप सारा चीज उसमें जो ट्रेडर से सीख सकते हैं ना, वो ट्रेनर से नहीं सीख पाओगे। क्योंकि वो जो लॉस मैंने लिया है 1, 1.5, 2 करोड़ का, वो लॉस मेरे को आपको सिखाता है कि ये नहीं करना है। मैं प्रॉफिट्स नहीं बताता हूँ कि मेरा प्रॉफिट्स ये है, मेरा ये है। आप लॉस से सीखो, और वो सारा चीज उसके अंदर है ही। चाहे वो 5 लाख का लॉस हो, चाहे 30,000 का लॉस हो, या 12 लाख रुपए का लॉस हो, आपको सब मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, फैंटास्टिक है ना सर। ये डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट, ये सब, ये एक मेरे, ये लास्ट बिफोर आई मूव टू फर्दर क्वेश्चन। कोई अगर सर ये कर ले प्रीवियस मंथ हाई, जो आपका BSL बोलते हैं, मतलब ऑर्डर बुक ट्रेडिंग में, इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग में, जो वाइकॉफ की जो मेथड है, वाइकॉफ लॉजिक्स पे काम करते हैं, वो BSL बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। व्हाट इज BSL? बाई स्टॉप एक्टिवेटेड। आपको पता है कि स्टॉप लॉस कौन एक्टिवेट करता है? ऑपरेटर स्टॉप लॉस एक्टिवेट करता है, एक साथ रिटेल का उड़ाता है। चाहे वो इंडेक्स में उड़ाता हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में उड़ाता हो, ऑप्शन सेलिंग में उड़ाता हो, किसी में भी उड़ाता हो। लेकिन अगर किसी को मालूम है कि प्रीवियस मंथ का हाई और प्रीवियस वीक का हाई अगर वो मैनेज कर सकता है, मैं वापस बता देता हूँ, प्रीवियस मंथ का हाई मतलब ये प्रीवियस मंथ का हाई अगर वो क्रॉस नहीं कर पाया, और वीकली प्रीवियस वीक का हाई, ये वीक है, ये प्रीवियस वीक का हाई, और क्रॉस नहीं कर पाया, तो सर वो स्टॉक वीक है। वो स्टॉक वीक है? वीक है, वो वीक है सर। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बड़े समझदारी से बनाइएगा। ये इतना है, आपके स्टॉप लॉस कट जाएंगे, क्योंकि ये हमने ऑपरेटर से सीखा है सर। और वो ऑपरेटर कोई आलतू फालतू ऑपरेटर नहीं है, 7-8 हजार करोड़ के ऊपर का काम करता है। हम कुछ भी नहीं है उसके सामने। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल लॉजिक है। स्टॉप लॉस एक्टिवेट होंगे मतलब 100% होंगे। जो जो ट्रेडर स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आया है, या थोड़े दिन के लिए ट्रेडिंग करने के लिए आया, उसका माल जमा हो जाएगा। मतलब ही विल ऑलवेज बी ए ट्रेडर टर्न्ड इनटू इन्वेस्टर। करेक्ट? This is what happens when the market falls. Trader turns into investor. Investor cannot become trader because his all funds are locked. Okay. He is just praying market to reverse. Okay. He will not look at it portfolio. He now becomes an investor. Now, to avoid to become an investor,
you should follow the simple BSL, where to spot buy stop active, buy stops levels. Okay, which is your clearing the stop loss orders, like previous month high, previous week high, previous day high. Now previous day high has been taken out very frequently. High of the day is taken out very frequently. Just manage previous month high, लास्ट वीक जो करंट वीक है, लास्ट वीक का हाई क्या है, और आपको ओल्ड हाई स्विंग्स तो मैंने बता ही दिया. एज अ मार्केट स्ट्रक्चर आपको 3 महीने का वो लेवल तो आएगा ही. जस्ट मैनेज दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग हैक्स. प्रदीप सर, एम आई क्लियर? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है अपने को. 2-3 मतलब कि प्रीवियस वीक से अगर हाई चल रहा है तो वो बुलिश है और उसके नीचे है तो वो बेरिश है. करेक्ट सर? हाँ बिल्कुल सर. क्यों वो हाई को तोड़ नहीं पा रहा है? एक 5 दिन का ट्रेडिंग हाई को क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? समझ रहे हैं ना? क्यों भारतीय एयरटेल टॉप पे है वीक मार्केट पे? ठीक है, देख लो आप. ये प्रीवियस वीक का हाई पे है, मैंने मार्क करके रखा है क्योंकि मेरी एंट्री होने वाली है. मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं कि भाई साहब मैं ट्रैप ना हो जाऊं उधर, क्योंकि ये भाई खड़े हैं. उसको तो क्लियर कर दिया, लेकिन जस्ट हैव टू वेट. दिस लाइन इज प्रीवियस वीक हाई, that's cleared with volumes. Now Bharti Airtel, if it stays above 220, starts consolidation like this, a solid move, because this was one move where it trapped entire retails, and the control from buyer was tested. Control broke, tested. Now your seller control was here. Look at how beautifully these guys managed. Came down, basement. You should ask ना, नीचे क्यों नहीं जा रहा है? सही है ना प्रदीप सर? नीचे क्यों नहीं जा रहा है भाई? इतना बड़ा सेलर आया है, नीचे क्यों नहीं? देखो छोटे छोटे कैंडल. दिस इज द एक्यूमुलेशन फेज. सपोजिंगली 1000 से लेकर अभी आप देखो 1220. विद इन व्हाट टाइम? 29 फरवरी. दिस वाज द सेम एरिया ऑफ द बायर. सेम एरिया पे इसने दो बार में ही ये निपटा दिया. देखो, ये एक बार था, 2 बार, सेम एरिया. देख रहे हैं ना सर, प्रदीप सर? सेम एरिया. जस्ट सी द लोकेशन. So spend time spotting such BSLs. Spend time spotting some SSL. SSL is stop loss order upside. अगर SS previous month low, the previous BSL is for exit or be cautious. Correct? BSL. SSL is the demand zone. Previous month's low, previous week low. Let me show the same thing. Previous week low. Previous month's low. Beautiful. See, month. एक भी order it has not closed below the trend. Weeks. Last week. Single take. मतलब ज्यादा आपको कुछ करने का जरूरत नहीं. Single take. Single day 3%, second day 5%, moved up to 7%. That's SSL for you. This is how institution trades. Previous day low, high तो common ही हो गया. Equal low आपको मालूम पड़ जाएगा support कहाँ पे. Old low, swing low, that is your market structure which I've taught you. Just have to focus this on 2 things for knowing your stops and knowing your demand. ठीक है. Pradeep sir, any questions? Pradeep sir, this is clear. Yeah. This is my on my 13 years experience.
From the last 7 years, we are doing this. Very good, very good. You know. So earlier we were a loss-making trader and disruptive traders. Now we are very stagnant. के यही लेना, यही strategy, इसी को पानी देना है, इसी को grow करना है, इसी को focus करना है. So we are one of the top players in Gujarat to handle our own money, not any client, by doing predictive price action where institution are. And options में अभी तक आप देखेंगे हमें अभी तक कोई challenge नहीं आया in any market. ठीक है. ऑप्शंस में गैप अप गैप डाउन में हो सकता है, बाकी कभी कोई चैलेंज नहीं आया. लाइक फॉर मी आईटीसी वाज वन ऑफ द केस. ठीक है, डिसरप्टिव, लेकिन ठीक है, उसको पकड़ सकते हैं बिकॉज यू नेवर नो, गैप अप और गैप डाउन आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है ना. सर व्हाट इज इक्वल लो? इक्वल लो सर, अगर आपका डबल बॉटम एक जगह पे आ जाए, ठीक है, जैसे ये एक this order and this order, absolutely. So this was a reverse order, no? This same closing, and here it was open low, नीचे विकी नहीं है, same order. ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको स्पॉट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है. लेकिन अगर कोई भी एरिया ऐसा आ गया ना, तो आप देखेंगे नहीं, 6 रुपए का ऑप्शन 48 रुपीज गया था. I've seen this happening in intraday charts sometimes. Absolutely. So and that is where the magic this happens. kind of sudden moves comes, like previous at support, previous 3-4 candles will be having high wick and green candles, and then there will be, it will be like now the price is going to go down, but immediately it will close in the green zone, and then the next candle will be a very big candle with high value. Because what happens is, see, this is as I said, अगर आप प्रॉपरली तरीके से देखेंगे ना, तो इंस्टीट्यूशन पिवोट के आजू बाजू ही काम करते हैं. तो दिस इज द फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग डे पिवोट. Came down. This was a seller, huge seller, good seller coming down, and look at this. This at his place intraday. मैं बताता नहीं, 30 मिनट से 5 मिनट में तो और भी आपको खतरनाक दिखेगा ही नहीं लो. This is open. It has never tested it lows on the opening 9:15. आया ही नहीं है. Price 1189 to 122. इंट्राडे मूवर्स के लिए मैं तो बोलता हूँ, आप डेली चार्ट पे देखेंगे ना, बिफोर 1 day only your homework will start. 1 day only. Just keep your charts ready ना. Just keep your watch list ready. देखो ना, watch list आप watch list बनाओ, red list बनाओ, कुछ भी रखो. आपको next trading day का रखना है. Just one move, like पता pattern ready रखो, आप pattern ready रखो. And this kind of move is it good to track on hourly chart for intraday trading? No sir, only daily. Okay, only daily sir. I will not prefer hourly chart. Hourly chart OI is made. Agar if the stock is there in future and option, you can be trapped. Okay, hourly chart. Because you don't have system like me. Okay, you don't have system like me where I can see order live orders and all. But what we can do is, whenever the price, see, like a small parag milk has come down from 291 to 194, 100 points down. In what session? 13 February to 13, 1 month. Take 100 points down. Now someone who is trapped will like to liquidate, now 35% down. Look, but it has come down to the best level, the buyer level. Why should you fear when you have lots of orders? See this guy, why should you fear? Come down, now check. This guy is not a fool. 25 August, this guy has single-handedly made from 173 to 206. There is a seller also, but the seller is not taken out. Seller base is defended. See, seller defended. This is tested. Same area, same price action. Can it go like this? It has gone like this. Now, why should we doubt here also?
You tell me, why should I doubt? When the past strong hands are there in the Parag milk at the same level, can't I bet my 30% position sizing in this? Yeah, absolutely. प्रदीप सर सही है क्या नहीं? Yeah. ठीक है. अगर मैं इधर confident हूँ, I am very confident over here where there is no trading here. I am very confident over here. Where there is lots of orders, why shouldn't I be confident? I should be confident and track Parag milk for the next week. You will come to know what I am saying. Okay. Tell me, sir. Good. 200 EMA line is crossed. No, 200 EMA is not crossed. 200 EMA is been defended. For crossing 200 EMA, you should have a strong, you should be taking out this guy at this top, where you can see this. As I said, I was also the same. What we want to see only we see, but what I see is this. What you see is 200 MA. What I see is cognitive price action happening at this 212. मैं तो इसका वेट कर रहा हूँ. The moment it starts trading over here, like in single can in 3 days it came to 290, 80, 70 points, 80 points. Can I repeat this? Lift, it came by lift, came by steps. It came up, it went up by lift, came by stairs. It can also come dhire also, and it can come down very fast. But I should be waiting for this 212 to clear. I will post my Parag milk entry in the group only. I'm just waiting. All these are my trade list, shopping list. Okay. प्रदीप सर को और कुछ ये समझ गए ना सारे लोग इसके अंदर? काफी कुछ समझ में आ गया लोगों को लगता है. सिंपल है. आपको कुछ भी डाउट रहेगा कभी भी फोन करो. ये मेरा सेम है, तिजोरी में मैंने दिया. किसी को तिजोरी बाय करने का जरूरत नहीं है. मेरा उसके अंदर एनालिसिस, पैसा मत बिगाड़ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये शोबाजी के लिए है, ये वो है करके. बाकी रियल चीज ट्रेडिंग व्यू में फ्री में मिलता है, एनएससी की साइट पे फ्री में मिलता है. ठीक है, वो लास्ट में मैं बता देता हूँ. तो परफॉर्मेंस ट्रैकर है, इसको ये मेरा नंबर है 968. प्रदीप सर नंबर दे सकता हूँ ना मैं? या यू कैन, नो प्रॉब्लम. 9687811911. अगर प्रदीप सर से पूछ लेना, प्रदीप सर अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो. मुझे वैसे भी कभी भी कॉल कर सकते हो. मार्केट टाइम में प्लीज मुझे मैसेज मत करना, डायरेक्ट कॉल करना. मैसेज देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट कॉल 110% उठा लूँ. कभी भी आपका कोई पोजीशन के लिए आप फंसे हो, ऑप्शन में फंसे हो, फ्यूचर में फंसे हो, हेज करना है, कुछ डेल्टा रिबैलेंसिंग करना है, कुछ स्टॉक के बारे में पूछना है, मार्केट आवर्स में, बेझिझक तो फोन कर देना. और वो सब फ्री है. आई एम फ्री टू बी यूज्ड. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अब 2-3 चीज मैं 2 ही मिनट लूंगा, ज्यादा फ्री. मैं आपको बता देता हूँ कौन सी साइट आपको यूज करनी है. सो बेसिकली एनएससी की एक साइट है जो एनएससी ओ एक्सपर्ट्स बोलते हैं. बड़ा सिंपल है, इसी से सारे लोग चोरी करते हैं और इसी का पैसा लेके दूसरे में पेड में करते हैं. सिंपल चीज है. और एनएससी ये लाइव डेटा है. ये लाइव डेटा आप देखो, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट एक्टिव अंडरलाइंग, ऑप्शन चेन और स्पॉट इन ओपन इंटरेस्ट. बड़ा ध्यान से इसको देखना. प्लीज फोकस ऑन दिस सेक्टर. Anything that you see in rise in OI, rise in price is your demand. ठीक है, that means अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आ गया इसके अंदर, active contracts by futures contract, active contracts, spot in OI is all about price. So what do you see? Why is the volume very high? Okay. Why is the volume very high in HDFC Bank? It is not going down. Why the volume is very high in ITC? Not going down. Why the volume is very high in Tata Motors? Then you should ask, Tata Motors ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ठीक है. Look at the futures value on Friday. ठीक है. Why the volume is very high in Bajaj Finance? It was never low. People were shorting Bajaj Finance left, side, center. Now people are fully trapped in Bajaj Finance. Left, right, center shorting. But you know, this was the level, same level it came up, same level it came up. It is showing the same level. The seller is out of control. Seller
It's trapped. Now just waiting for the seller top to be taken, and the price move like cognitive level is. Once this moves, there is only one seller which we want to see. One Sachin Tendulkar is standing over here, but we have a great master over here also, buyer. For every big seller, please go in the past, check data. You will see buyer happily standing there in monthly chart. Don't look at lower time frame chart. Monthly chart will clear who is in control. See, big buyers. No one is ever negative. See, double bottom. See, buyer top. Just going to clear. Strongest buyer is this guy. As like strongest seller was this guy. This guy was taken out single-handedly after March, April, May, June, July, August, September, October, November, taken out, retest done for Jan, Feb, March. It has never came back to this level. It has never come back. Still the level. 28% दूर है अभी. If you know institutional price action, it works in tandem. And कोई नहीं देखता. No one even knows properly कैसे इसको use किया जाए. It is freely available, but it requires lot of time, 3, 4, 5 months. But once you understand and once you trade like this, you are far more superior than any retail that you are thinking. उनको कुछ पता ही नहीं है. So it is all about I am done. So आप ये use कर सकते हैं NSE का OI expert. It has everything, and please do look in for value at risk. So you will get two things. Like if you want to trade Tata Motors, you should understand the annual volatility and daily volatility in a stock. Before understanding this, ये काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि आपको पता है डेली वॉलेटिलिटी, एनुअल वॉलेटिलिटी किसका होता है? पूरे साल में टाटा मोटर्स कितना गिर सकता है या पूरे साल में टाटा मोटर्स कितना बढ़ सकता है. नाउ डेली वॉलेटिलिटी इज टाटा मोटर्स कैन डबल. एक डेली वॉलेटिलिटी इसको डबल कर दो. फॉर्मूला ऑफ डेली वॉलेटिलिटी इज डबलिंग व्हाट यू आर सीइंग. ₹1.80 का आप डबल कर दो. ₹3.60% गिर सकता है टाटा मोटर्स ऑन एनी गिवन डे वेयर द मार्केट इज वीक. करेक्ट प्रदीप सर? हाँ, नहीं तो डेली वॉलेटिलिटी 1.80 और एनुअलाइज 34.39. तो यानी कि अगर वो 1,000 रुपए का शेयर है, हाँ, तो 34% या 34 एब्सोल्यूट ने वैल्यू? 34 एब्सोल्यूट, यानी कि आप मान के चलो 64%, 68% गिर सकता है या बढ़ सकता है. हाँ, 68% ना. ओके. हाँ, आपका गिर सकता है, इस आपका बढ़ भी सकता है. ठीक है. सिमिलरली डेली वॉलेटिलिटी मतलब 1.8% into 2, 3.6 गिर सकता है या 3.6% ऊपर जा सकता है. एब्सोल्युटली. आप इसको हिस्टोरिकल डेटा में देख ही सकते हैं. फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल. और इसमें अच्छी चीज क्या है पता है? ये आपको मार्क करके देगा हाईएस्ट लेवल. देखो 5 मार्च को हाईएस्ट लेवल इसका था 1065. अभी 22 फरवरी को लोएस्ट लेवल था पूरे साल का. ठीक है. अगर कोई आदमी मतलब अगर कोई भी बंदा अब 914 के आसपास आता है और प्राइस एक्शन देखता है इंस्टीट्यूशन लेवल का, अगर वो फिर भी बाई नहीं करता तो किधर बाई करेगा सर? टॉप पे बाई करेगा ना, ब्रेकआउट पे. ठीक है. आप देखो सिंपल था. आप कितना गिर सकता है देखो. आप देख सकते हो. माइनस करोगे इसको, एक्सेल शीट में डाउनलोड करोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा ट्रेड कहाँ गिरे. नंबर ऑफ ट्रेड भी तो बहुत इंपॉर्टेंट ना. ऑर्डर बुक देखो, सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक कहाँ दिख रहे हैं आप? इसी जगह पे दिख रहे हैं ना. नंबर ऑफ ट्रेड्स देखो ना. हु आर इंटरेस्टेड? रिटेल्स आर नॉट इंटरेस्टेड. बिग प्लेयर्स आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड. वो पहले से इंटरेस्ट बना दिया. कब बनाया सर? जब भी ये ऊपर ट्रेड करने लगा. सी ए स्टॉक ट्रेडिंग, टाटा मोटर्स ट्रेडिंग विथ 1,37,000, 1,53,000, 157, 186 सडनली केम अप. ठीक है. सडनली वॉल्यूम इंक्रीज्ड. द वॉल्यूम रिटेलर को क्या दिखेगा? इट इज गोइंग डाउन. बट बड़े प्लेयर को क्या दिख रहा है? इंक्रीमेंटल ऑफ ट्रेडिंग. 177, 155, सडनली 137 वाला डबल, 255, 274, 260. छोड़ नहीं रहा है अभी.
2.5 लाख ट्रेडिंग ऑर्डर को छोड़ नहीं रहा है, उसके बाद डायरेक्ट नीचे ऑन 2nd of March. सी विल टेक 5 more minutes, हाँ प्रदीप सर, उसके बाद क्लोज कर ले. 2nd of March. This is the area where suppressive price action came. No trading at all. ये वो सैटरडे का दिन था, आपको याद हो तो, है ना, ड्राई रन वाला. ठीक है, ड्राई रन वाला दिन था सर, ड्राई रन वाला. कितना इंपॉर्टेंट डेटा है सर. ट्रेडिंग देखो, उसके बाद देखो सडन मूवमेंट, उसके बाद देखो डल मूवमेंट, वापस 2 लाख की आने लगी लाइन. अब देखो सडनली क्या हो रहा है, ये 2 लाख वाली लाइन है ना, वो सडनली बढ़ रही है ना. 4 लाख अब आपको, हाँ बस, तो आपको बस यही तो देखना है. जो रिटेल देख रहे हैं उससे अलग देखना है आपको. जो फंड मैनेजर जैसा ट्रेड करता है, बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े ऑपरेटर जो देख रहा है ना प्राइस को, वो देखना है. और वो सब फ्रीली अवेलेबल है. किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. टाइम स्पेंड करने का जरूरत है, पैशन लेके आने का जरूरत है, कमिटमेंट देखे आने का जरूरत है. अपना, जैसे मेरा तो ब्रेड एंड बटर यही है, तो मैं तो यही पूरा देखता हूँ. लेकिन मैं ये बोलता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो सारे लोग कर सकते हैं. ठीक है, कब मालूम नहीं पड़ेगा, कब ये सेकंड इनकम मेन इनकम बन जाएगा. सही है ना सर? राइट, है ना सर? चलिए, कोई क्वेश्चंस है कि नहीं किए? Q&A? हाँ, किसी का क्वेश्चन है तो बताओ. आई एम Yes, रेडी sir. टू टेक. Hello. हाँ, बोलिए. Sir, I want your view on Apollo. Actually, some of the things what you have told, I am following from last several years. Okay. So I am trying to put it on automated trading, just to avoid my human interaction or manual interaction. So if Pradeep sir allows me, I will share my screen also. So option I am put option I was tracking for last 3-4 days. Sir, we are talking about Apollo Hospital. Yes. So you are tracking put option. Yeah. Okay. Do you know the? Hope you are knowing, or do you know the IV shifting happening in put options? That much I haven't started trying. No, just I. Then sir, it's very risky, sir. Very risky. Yeah. Because Okay. if you are not knowing the Yeah. IV delta comparison, I will see. Let me take 1 minute. Pradeep sir, 1 minute ले सकता हूँ ना मैं? हाँ, लीजिए ना. देखो, ये ऐसे ही रिटेलर का पैसा चला जाता है ऑप्शंस. No, I haven't taken any position. No, don't take. Please don't take, because you Yeah. don't be, because you are not tracking Yeah. the IVHV. When the Apollo Hospital, please check why people lose money in option is simply because they are not tracking IVHV. See, this was the IV historical volatility. Whenever it crosses, implied volatility crosses historical volatility from bottom or from top, there is a move going to happen. Now, same length, same, you can see that it is hugging each other, historical volatility, and you can see the same level, na? Implied and historical, both at 30.3 and 30.2. Correct? Yes. So this is the time when reversal will happen. Please don't do any options. This is a very dangerous time. Please avoid, because you are at a very important zone. IVHV will demand your side. Why is the seller is here? Yeah. The seller is here. IVHV again giving you an hint that there is a directional move. There is a gap going to happen. IVHV. Okay. IVHV. And you'll possibly see intraday also, EOD also. Now, suddenly, if you are not seeing, if you are not able to see the bleeding, where the IV will bleed. See, IV will bleed over here. You can see there is a bend. Please don't even enter, because you will be entering into highest risk. Yeah. Please don't. No. Avoid option.
and come down to, if you want to sell a put or sell a call, please come down and sell a 10 delta. है ना, 10 delta, always 10 delta. 10 delta are safe because 100 points move, 10 rupees movement. Correct. But this is a subject मैं आगे लूंगा. We will continue whenever Pradeep sir will allow. But you see, IV is entering into a red zone. Yeah. You will not be able to manage options. 100% you will not be able to manage options. Okay. Because you are not seeing the IV bends. No, actually, this is for a reason. I'm developing a automated software. So I want to, at present I'm having a price action chart. Okay. So I want to include open interest and this option data also into my charting software. Yeah. Just I'm trying to do some, right? Yeah. That's why I asked you. No, bilkul. You can connect me anytime. Right, I can definitely help you. Actually, there are a lot more to think. I'm having elective chatting software also. So usually I track daily, monthly also. So chatting is my passion. Yeah. Okay. That's good. But what we are having, sir, Bloomberg. Yeah. Have you heard? we trade with Bloomberg terminal. We have an access to Bloomberg. Okay, sir. Okay. But it is of no use if you don't know cognitive price action or positive price action. See, it is at a level, and if you combine the open interest as well as whatever you're seeing on the IV, IV always stands, because whenever the IV spikes happen, your delta movement is very fast, correct? Yeah. And what are local people like you and me tracking right now is delta theta, correct? But there is something called Vana, Voma, Charm. These are all second order Greeks. If right now, where is the edge? Where is the operator's edge? Operator's edge is in Voma. Operator's edge is in Vama, Charm. And we are trading on delta, theta. कितना थीटा डीके होगा, कितना डेल्टा डीके होगा, ऐसा नहीं चलेगा, वो अपने को निपटा देगा, ठीक है? So be very careful with the institutional level. See, whatever I'm saying is based on my understanding of all these years. I'm taking so much losses, so much adjustments. उसके बाद एक setup बनाया है कि ऐसे ही मुझे देखना है, ठीक है? So I can always warn you and correct you and guide you based on my past performance, and at what level I am trading in, I am sure that I am not wrong, correct? क्योंकि मेरे को उधर loss हुआ है ना, सही है ना प्रदीप सर? So please be very careful in चलिए, बहुत बड़ा सेशन हो गया, almost 4 hours. Yeah. Hello. Does Vega also has a second? 1:30 will close. We have 9 more minutes. So एक दो question है तो ले लीजिए आप. Yeah, बोलिए. Yes. Good afternoon to everybody. I would like to ask you if we can get recording to this particular session. So it is on the YouTube. You can go to the PK Kothari channel. You will get the recording there. Okay, I'll see it. Whether I have recorded this also. So, but it is being recorded automatically at the YouTube. Okay. Okay, I'll try that. Yeah. Thank Yeah. you so much. Please, if you could put a link over there. क्योंकि पूरा PK recording Kothari. नहीं सुना. Just put PK Kothari YouTube. You will get my channel. PK Kothari. Today's recording will be seen there. Yeah. It is being live stream, na. So you will get there also. Don't worry. Okay. Thank you so much. Thank you, Mr. Pillai. और कोई, yes, thanks man. और कोई पूछ रहा था कोई वेगा के बारे में कुछ मैंने सुना? I was asking about Vega. I mean, it is said that Vega moves are very dangerous. So does Vega also has a second derivative move, and that is controlling Vega? Absolutely, you are absolutely right. See, what does Vana do? It increase Vana is, what does it do? It increases the implied volatility of options. Okay. So Vega is, whenever you see spike in delta, that is because of second order Greeks, Vana. ठीक है. So आगे जाकर हम लोग क्या, मैं प्रदीप सर को बोलूंगा, we will keep a special session on options, because इतना बड़ा चीज है ना, आपको मजा आ जाएगा और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये सब क्या है, ये और ये क्यों देखना है ये सभी. जैसा प्राइस एक्शन है, ये मेरा जो आज का प्राइस एक्शन है, ये मेरा 1% भी नहीं है, ठीक है.
कितना सारा चीज है बताने को, वो ऐसा है like एक नहीं, लेकिन अच्छा है. like Hope you. number of trades also has a very deep thinking behind it, and that is also a very good session. If you Absolutely, can, sir. I am thankful to all of you for attending, and I'm especially thankful to producer for allowing me कि आप present करो, देखो कैसे कैसे चल रहा है. Sir, I am also personally thankful to both of you, Kothari ji, to introduce you, and Pillai sir. I am also from Ahmedabad, so I'll Great, soon sir. get in touch with you. बिल्कुल, Very बिल्कुल. interesting presentation, sir, and very useful insight. And Kothari ji, namaskar and lot of thanks. Thank you. Thank you. yeah, thank you, Kothari ji. Sir, and you please Pillai keep ji. arranging It such sessions. was a wonderful session. We conduct on Sir, yeah, Sundays. keep. Sunday को करते हैं हम लोग. So Yeah. So you can attend, and then I notify in our groups. So group में आप रहेंगे तो you will get the notifications when we are conducting such webinars. Okay. सर जितने भी लोग बोले वो सर अपना माइक अपना वीडियो भी ऑन कर दें तो धीरे धीरे सबका परिचय बढ़ता जाएगा. Thank you, sir. Okay. We'll see. So Pradeep sir, I am very thankful to you so, for giving me an opportunity. Hope so कि नहीं अच्छा लगा Shammy जी, होगा कुछ नया सीखने को. नहीं we are really grateful to you कि आपने बिल्कुल एक नया और इतना सिंपल बताया. सबसे बड़ी बात है कि लोग बताते नहीं है. सबसे बड़ा आज इशू क्या है ना कि लोग वो बताते हैं जो कि मतलब काम का ही नहीं है. तो आप आज आपने तो वो बताया कि जो रियली मतलब इंसाइटफुल है और लोगों को समझ में आया. एंड वेरी गुड. एंड द वे दैट आई एम गेटिंग रिक्वेस्ट फॉर रिपीट वेबिनार, it itself shows कि you are expertise and mastery in the subject. So thank you very much, and thank you to the Sachin of the Hyderabad. He only introduced you. Sachin. Yes. Sachin is in my team and is a wonderful trader. And उसने नहीं मेरे को बोला था कि हम क्यों expand, क्योंकि अभी तक क्या हम लोग शाही थे सर. हम कभी ये किए नहीं है ज्यादा कुछ. ठीक है, क्योंकि हम इसी में ही पड़े रहते थे. हमने सबको ये बोला कि आप कभी भी फोन करो, हम बता देंगे, आपके साथ सेशन ले लेंगे, लेकिन कभी भी कमर्शलाइज नहीं किया है हमने कुछ भी. वेरी गुड. आप क्या प्लान कर सकते हैं? दैट इज माय सजेशन कि at a nominal fee of say 5,000 rupees, you can have a session of 2-3 Saturday Sunday. तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब आपने अपने जो पूरा जो 15 साल 20 साल का जो एक्सपीरियंस है आपका वो कंडेंस करके और लोगों को 2 या 3 सैटरडे संडे में बता देंगे. और नोबडी विल माइंड पेइंग आल्सो कि अच्छा ठीक है यार सैटरडे संडे का 4-5 हजार रुपए दे दिया तो ऐसा करके हो जाता है. वो बहुत नॉमिनल है, बट एक कंबाइंड करके आपको भी थोड़ा आ जाता है तो आपको भी थोड़ा इंसेंटिव हो जाता है. दैट यू कैन प्लान. मैं सचिन से डिस्कस कर लूंगा. और मैं ऐसा कोई प्लान कीजिए तो मेरा वर्कशॉप, फुल वर्कशॉप जो जिसमें मैं सर लेने को 100% लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक सर ये मेरा पैशन है. ओनली सैटरडे संडे से चलता है. वी डोंट वांट मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे संडे का ही कराएंगे. उसमें भी वही 3 घंटे का जो है ऐसा करके प्लान करेंगे. बिकॉज आपका बहुत अच्छा लगा मुझे भी. सो थैंक यू, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल द मेंबर. ये इजी हो कि एक हाउसवाइफ भी समझ सके और कुछ कर सके उसमें. ऐसे लेमन लैंग्वेज में प्लीज समझाइएगा. या मैडम वो आपको लेमन में ही आएगा, आप उसकी चिंता मत करिएगा. और फिर भी कहीं भी आपको डिफिकल्ट आए तो आप प्रदीप सर को कांटेक्ट कर सकते हो. आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, पर फिर भी मुझे घर के कामों की वजह आई हैड टू कीप ऑन गोइंग एंड देन कमिंग. पर बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मैं अभी तक जुड़ी हुई हूँ. मैं आई हैव नॉट लेफ्ट योर सेशन ऑल्सो. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. थैंक यू सो मच कोठारी साहब. आपको भी गॉड ब्लेस यू. ब्लेसिंग्स टू यू एंड गुड विशेस. थैंक यू. चलिए विल एंड देन. चलो थैंक्स अ लॉट सर. और कुछ भी रहेगा टू ऑल द मेंबर. और कोई मेंबर कुछ बोलना चाहता है? लास्ट कमेंट समथिंग लाइक दैट ऑन द वेबिनार और एनी